that's good. और आध्यात्मिक रूप से ये बहुत अच्छा है, Because it means not going to last forever. यानी कि हम हमेशा जीवित नहीं रहने वाले। Time is running out. समय खत्म हो रहा है। Hare Krishna. We ready? हम तैयार हैं? Is that your father? क्या ये आपके पिता हैं? आपके Your father was here, right? आपके पिता भी यहाँ पे हैं ना? That's your father? ये आपके पिता हैं? Really? Acha. I never would have guessed that. मैं कभी इसका अंदाजा ही नहीं लगा पाया। Hare Krishna. I'm telling your father what to do. Don't sit against the wall. I hope you're not upset with me. मैं आपको पिता को कह रहा था दीवार पे लगकर मत बैठिए, आप सो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस बात से नाराज नहीं होंगे। But we want to get mercy from Śrīmad-Bhāgavatam. लेकिन हमें श्रीमद् भागवतम से कृपा चाहिए। So we have to be attentive, awake, तो हमें ध्यानपूर्वक और जगे हुए रहना होगा। cry for mercy. कृपा के लिए प्रार्थना करनी होगी। You ready? आप तैयार हैं? Your brothers, you're getting along nicely now? आप भाई लोग एक साथ आपस में अच्छे से रह रहे हैं अभी? Some mutual respect, love and affection. आपसी आदर और प्रेम और स्नेह एक दूसरे के साथ। Is there anybody perfect in the material world? क्या भौतिक जगत में कोई भी पूर्ण है? Don't we want everybody not to judge us? हम नहीं चाहते कि हमेशा हम पे कोई दोष ना निकाले। Don't we want other people to be liberal with us and to overlook our faults? हम नहीं चाहते कि कोई हमारे दोषों के ऊपर भी हमसे देखे हमारी अंदर की चीज़ें, अच्छी चीज़ें। Prabhupada said everything in the material world, everything is faulty here. प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ त्रुटियों से भरा है। So to find faults in the material world, this is not a very big, significant thing. तो भौतिक जगत में कुछ दोष ढूंढ लेना ये कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। What's more difficult is to see what is our fault. ज़्यादा मुश्किल ये देखना है हमारी क्या गलती है। What can we do better? हम क्या अच्छे तरीके से कर सकते हैं? How we can work on ourselves to become a better person, better devotee. हम अपने ऊपर और क्या काम कर सकते हैं, हम बेहतर व्यक्ति, बेहतर भक्त बन सकें। That's not always pleasant. ये हमेशा सुखद नहीं होता। And not easy. आसान नहीं होता। But it's very easy to just glance out and find fault with everybody and everything in the material world. ये बहुत आसान है बाहर देखना, दूसरों के साथ भौतिक जगत में दोष निकालना। That's not such a big deal. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। So it says you should try to find fault. Because we have fault-finding tendency, we should try to find what is our own fault. क्योंकि हमारे अंदर दोष निकालने की ये प्रवृत्ति है, तो हमें ये दोष निकालने की प्रवृत्ति अपने ऊपर लगानी चाहिए। And other people, they're also in the process, more or less. और बाकी लोग भी इस प्रक्रिया में हैं, कम या ज़्यादा। And they're under the guidance of Krishna, the Guru process. They have their own way. If someone's looking after them. और वो इस प्रक्रिया में है, गुरु कृष्ण के निर्देशन में है। My Gurudev said that's not your lookout. मेरे गुरुदेव कहा करते थे ये आपके देखने के लिए नहीं है। No one asked you to make that your lookout. किसी ने आपको नहीं कहा ये करने के लिए। And if everybody wants to be a guru, और सभी कोई अगर गुरु बनना चाहते हैं, everyone wants to establish themselves. हर कोई अपने आप को स्थापित करना चाहता है। Everyone in the material world thinks out of false ego pride. They know so many things. हर कोई भौतिक जगत में अपने मिथ्या अहंकार और दंभ की वजह से सोचते हैं मैं। So not only do we want to find fault, but we want to instruct everybody also. ना तो हम बस सिर्फ लोगों में दोष देखते हैं, बल्कि हम उनको आदेश भी देते हैं। My Gurudev used to say, before you instruct someone, you should find out, will they appreciate what you're about to say, and will they consider and accept what are you going to say to them? मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते थे कि अगर आप किसी को कुछ निर्देश देना चाहते हैं तो आप पहले देखिए वो उसको स्वीकार करेंगे, सराहना करेंगे, समझेंगे या उसको लागू करेंगे या नहीं, उस पर विचार करेंगे या नहीं। So if they'll not respect you and they'll not appreciate what are you saying, then why bother them? तो वो अगर आपका आदर नहीं करते, सराहना नहीं करते, आप उनसे कुछ कह रहे हैं उस बात का, तो क्यों उनको परेशान करना? You'll just disturb them. आप बस उनको परेशान करेंगे। And then you'll be disturbed. फिर आप परेशान होंगे। So what is the value of that? तो इसका क्या मोल है? So just work on ourselves. तो अपने ऊपर काम कीजिए। If we come to learn something, we may try to help our friend or brother. अगर हम अपनी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम फिर अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। Or sister. बहनों की।
But will they take it in that spirit? लेकिन क्या वो उस भाव से उसको ले पाएंगे मदद को? Will they respect and appreciate what you and what are you telling them? क्या वो आपका आदर करेंगे, आपकी सराहना करेंगे, या आप क्या उनसे कह रहे हैं उसका सम्मान करेंगे वो? And if not, then just better don't bother. और अगर नहीं करते तो उनको परेशान करने का कोई मतलब नहीं। And just keep working on yourself. अब स्वयं पे काम करिए। But because that's not easy, it's very much easier just to look out and find fault with everybody else. लेकिन ये आसान नहीं है, और ज़्यादा आसान है दूसरों के ऊपर दोष निकालना, दूसरों की बुराइयां देखना। So we're busy doing that. और इसलिए हम उसमें व्यस्त रहते हैं। It's like full-time occupation. हमारा full time पेशा है ये। From the moment we open our eyes, we're finding fault and criticizing something, someone. जैसे हम अपनी आँख खोलते हैं, हम किसी न किसी चीज़ की बुराई निकालते हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ ढूंढते हैं। It's a very bad habit. ये बहुत बुरी आदत है हमारी। And we're addicted to it. और हमें इसकी बुरी लत लगी हुई है। So to stop that, it says try to find fault with yourself. तो इसको रोकने के लिए कहा जाता है अपने अंदर बुराइयां देखिए। Look at what is the standard, what is expected of us from spiritual point of view. आध्यात्मिक स्तर से देखिए हमसे क्या उम्मीद रखी जा रही है, स्टैंडर्ड क्या है। That standard absolute platform is being explained. और ये परम स्तर जो है आपको बताया जाएगा। Then how much are we meeting that requirement? और हम उस जरूरत को कितना पूरा कर पा रहे हैं? How close are we coming to that? हम कितने नजदीक उसके स्टैंडर्ड तक पहुंच पा रहे हैं? And we'll find that we're not, in many ways, very far along the path. और हम देखेंगे हम कई तरीके से बहुत दूर हैं उस रास्ते से। So that should be very humbling to us. तो इससे हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। It should humble us when realizing that. हमें विनम्र होना चाहिए जब हम इसको अनुभव कर पाएं। And if we're more humble, then we won't puffed up way criticize other people. तो अगर हम विनम्र होंगे तो हम इस तरह से अहंकार से दूसरे को गलतियां नहीं निकालेंगे। And because we want mercy, we want blessings, we don't want people to judge us, why don't we do same thing to other people? जैसे हमें कृपा चाहिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, हम नहीं चाहते लोग हमारे अंदर बुराई देखें, तो उसी तरह हम क्यों नहीं दूसरे के ऊपर भी यही चीज़ लागू करते हैं? Do we like if somebody doesn't really know us and they're judging us and criticizing us? Do we appreciate this thing? क्या हमें पसंद आता है? हम इस बात की सराहना कर पाते हैं? अगर कोई हमें नहीं जानता है, हमारा सम्मान नहीं करता, हमारे अंदर बुराई निकालता है, हमें अच्छा लगता है ऐसा? It's very painful actually. असल में बहुत दर्दनाक होता है ये। And they give you no chance at how to help yourself or rectify yourself. और वो आपको कोई मौका नहीं देते, आप स्वयं का मदद कैसे करें, अपना सुधार कैसे कर पाएं, उसका कोई मौका नहीं देते। So they're not open-minded, they're not liberal-minded. तो वो ऐसे खुले दिमाग वाले नहीं हैं। Very strict, no room for any mistake. बहुत ही कड़ी सख्ती से, और गलती का कोई उम्मीद ही नहीं। And then you're condemned. और आपकी निंदा की जाती है। And you're going to rot in hell eternally. और आप जो है अनंत समय तक नरक में सड़ेंगे। Is that very inspiring? क्या ये बहुत प्रेरणा देता है? Do we like when people do that to us? क्या हमें पसंद है जब लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं? So why are we doing the same thing to other people? तो यही चीज़ हम दूसरे लोगों के साथ क्यों करते हैं? That's not our lookout. That's not our business. ये हमारा देख रेख की चीज़ नहीं, हमारा काम नहीं है ये। Guru and Krishna, they're taking care of those person in their own way. गुरु कृष्ण उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं अपने तरीके से। It's like that example, like you're sick and then you're in the hospital and then you're going room to room telling everybody, hey, do you know you're sick? जैसे कि आप बीमार हैं और अस्पताल में हैं और आप एक एक कमरे में जाके हर एक बीमार व्यक्ति को कह रहे हैं, तुमको पता है तुम बीमार आदमी हो? You're diseased, you're in the hospital, and you're going and announcing to everybody in the hospital rooms that they are sick and diseased. आप खुद बीमार हैं, आप खुद मरीज हैं, अस्पताल में हैं, और आप अस्पताल के अलग-अलग कमरों में जाके बाकी बीमार लोगों को घोषणा कर रहे हैं कि ओ तुम बीमार आदमी हो। So this is very helpful, inspiring to them. तो क्या ये उनकी बहुत मदद करेगा, उनको प्रेरणा देगा? And we have some right to say. और हमारा कोई अधिकार है उनको कहने का? And we have no solution to help them. और हमारे पास कोई समाधान नहीं है उनकी मदद करने के लिए। This is meaningless. इसकी कोई महत्व नहीं। So we should remember this thing. हमें इस बात को याद रखना चाहिए। So if we're busy finding fault with ourselves, measuring ourselves against the standard, there's no other time than to do that work. अगर हम स्वयं के दोष निकालने में हमेशा व्यस्त रहेंगे, स्वयं के कमियों को देखने में व्यस्त रहेंगे, तो हमारे पास समय नहीं होगा कि हम किसी और की गलतियां देखें। In English they say, you have enough on your own plate. अंग्रेजी में कहावत है, आपके खुद के थाली में बहुत भरा हुआ है।
than to worry about what's on someone else's plate. इसका ये दूसरे की चिंता मत करिए कि दूसरे के प्लेट में क्या है. So if everybody's trying their best to work on themselves to get mercy of Guru and Krishna, that's the best you can expect from them. तो सभी को अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, ये आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं. Don't waste your energy, mental energy, other energy, doing someone else's work. अपना मानसिक ऊर्जा खर्च मत कीजिए दूसरे का काम करने के लिए. No one asked us to be guru. आपको किसी ने गुरु बनने के लिए No नहीं one कहा. asked us to correct anybody किसी ने आपको दूसरे को सही करने के लिए नहीं कहा है. or to criticize other person. दूसरे का No, दोष no निकालने one के लिए asked नहीं you कहा. to do like that. किसी ने आपको ऐसा करने को नहीं कहा. So if we can't help them, then better don't disturb them. अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए. Make sense? मतलब Then it makes it better for relationship. तो इससे हम बेहतर संबंध बना सकते हैं. Because Maya, she makes so much misunderstanding. क्योंकि माया बहुत गलतफहमियां पैदा करती है. And we're going to discuss this. और हम इसके बारे She में just चर्चा makes करेंगे. so much confusion and misunderstanding. क्योंकि ये बहुत सारे भ्रम और बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करती हैं. Because we have imperfect mind, intelligence, and senses. क्योंकि हमारे अपूर्ण मन, इंद्रिय और बुद्धि है. So that's creating misunderstanding, and misunderstanding is creating conflict. तो ये गलतफहमियों की वजह से हमारे बीच मतभेद पैदा हो रहे हैं. Internal conflict भीतरी and मतभेद external conflict. और बाहरी में भी मतभेद हो रहे हैं. That means no peace, इसका मतलब कोई शांति नहीं, and no peace means no happiness. और कोई शांति नहीं मतलब कोई सुख नहीं. So we have to remember this thing. तो हमें इसको याद करने की जरूरत है. Why does Bhaktivedanta.Swami Thakur say in the morning, beat your mind with the shoe, with the stick? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि सुबह उठते ही साथ अपने मन को पीटो डंडे से. And one of those tendencies that you're beating down is fault-finding mentality. और एक प्रवृत्ति जो है मन को जिसको आपको पीटना है वो है दोष निकालना दूसरों के अंदर. That means this, right as soon as you wake up, immediately we're finding fault. इसका मतलब जैसे ही सुबह हम उठते हैं तुरंत ही हम दोष निकालना शुरू करते हैं. Negative, pessimistic, critical, नकारात्मक, दोषपूर्ण, गलतियां निकालना, blaming. दोष ढूंढना. It's a very bad habit. बहुत बुरी आदत है ये सब. So we have to curb that tendency. तो हमें इस प्रवृत्ति को मोड़ना है. Beat it with the stick, beat it with the shoe. डंडे से जूते से पीटना है उसको. Don't allow it. अनुमति मत दो इसको. And the only way to overcome that is to look at your own faults. और एकमात्र तरीका है इससे बाहर आ पाना स्वयं की गलती ढूंढो. And when you start to see really how far short we are to what is expected of us, it should really humble us out. और जब हम ये देख पाएंगे कि हमसे क्या उम्मीद रखी जा रही है और हम उसमें कितने कमी है हमारे अंदर उस तक पहुंचने के लिए, हम उससे बहुत दूर हैं उस रास्ते से, तो हम ये बहुत विनम्र बनाएगा. My Gurudev said, if you're not humbled out, how you'll cry for mercy? मेरे गुरुदेव कहा करते हैं अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो आप कृपा के लिए कैसे रोएंगे. We're building cases against other devotees like a lawyer, advocate. हम वकालत करते हैं दूसरे भक्तों के खिलाफ, जो है जैसे कोई वकील है दूसरे के खिलाफ केस बनाता है. When I say why you're not getting along, they say, oh, I have a whole list, and they give me the list like a lawyer in the court. तो मैं जब पूछता हूँ भक्तों से कि आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रह रहे, तो मुझे पूरा लिस्ट देते हैं, जैसे वकील वकालत के समय पूरा लिस्ट देता है कि क्यों मैं उसके साथ. And they just like rattle it off one after another. This is my argument. This is why I'm right and he is wrong. और वो इस तरह से अपना एक बहस अपना करते हैं, कहते हैं इस वजह से मैं सही हूँ और इस वजह से वो व्यक्ति गलत है. And then I say many times, definitely he probably has some fault. मैं कहता हूँ अवश्य उनमें कोई ना कोई त्रुटियाँ होगी. And they say, oh yeah. एकदम है, बिल्कुल है. But I said, do you have any fault लेकिन फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपके अंदर कोई बुराई है, कोई त्रुटि है in this matter? इस संबंध में? Could you have done anything better? क्या आप कुछ और बेहतर कर सकते थे यहाँ? Is there any room for improvement for yourself? Okay, he has some faults, but what about you? क्या आपको कुछ बेहतर करने का कोई जगह है आपके पास, या उनके और आपकी क्या गलती थी उसमें? Where's your list? Where's your lawyer advocate list of all of your own faults कहाँ वो and what you could have done better? वो वकालत का सारा लिस्ट, आपकी गलतियों का लिस्ट कहाँ है? आप उसका वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके वकील क्यों नहीं बन रहे आपकी गलतियों? You didn't build that list. आपने वो लिस्ट बनाया ही नहीं अपनी. You didn't consider that thing. आपने सोचा भी नहीं उसके बारे में. Only one-sided argument? सिर्फ एक तरफा बहस हो रहा है. We're right and everybody else is wrong? हम सही हैं बाकी सब गलत. This is how we'll proceed? इस तरह से हम देखेंगे.
We have no fault, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, especially to the standard. We have no fault. विशेष करके जो हमसे उम्मीद रखी जा रही है स्टैंडर्ड है उसके We're उसकी perfect तुलना में हमारे पास person, कोई, perfect devotee, perfect Vaishnava. क्या हम पूर्ण व्यक्ति हैं, पूर्ण भक्त हैं, पूर्ण वैष्णव हैं? We should be humble. हमें विनम्र होना चाहिए, Realizing that, we इसका should be साक्षात्कार humble. करके हमें विनम्र Not होना a big चाहिए, false ego. बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए हमारा। And if we're humble, then we can beg, pray for mercy, और blessing. अगर हम विनम्र होंगे तो हम कृपा के लिए रो पाएंगे, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। Please help me, please pray for me, please tolerate me, right? कृपया मुझे मदद कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे सहन कीजिए। That helps ये in इस our तरह से- spiritual life. और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में मदद करेगा। I remember one time I gave this really fired up class in Bhubaneswar, and I was looking at one devotee, the whole class. और मुझे याद है मैंने भुवनेश्वर में एक क्लास दिया, पूरे जोर शोर से क्लास दिया। उस क्लास में मैं पूरे समय एक भक्त की तरफ देखकर मैं उसको क्लास दे रहा था, And he was Western devotee. और वो एक विदेशी भक्त था। Then after the class, I said, hey, did you like the class? Did you get all the points? और क्लास के अंत में मैंने उस भक्त से पूछा, हे तुमने उस क्लास के कुछ चीज़ों को याद रखा, आपने सारी चीज़ों को समझ पाए आप? And he said, why you have to change? Why? Okay. So let me just finish this point. तो मैं इस बात को खत्म करता हूँ, उसके बाद आप So I बताइए। said, you liked the class? You got the points of the class? तो मैंने कहा आपको क्लास पसंद आया जो मैंने दिखा And he दिया? said, oh, definitely. मैंने कहा हाँ बहुत पसंद आया मुझे, I loved it. You really told these Indian people what to do, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कैसे भारतीय लोगों को बताया कि उनको क्या करना चाहिए। I said, I was talking to you. मैंने कहा मैं तुमको बता रहा था सारा क्लास। Why are you saying the Indian people? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ये भारतीय लोगों के लिए क्लास था। Right? So the Indians are saying, oh, this is good for those Westerners. They don't know the culture. They don't know our religion. This instruction is for those people. तो भारतीय लोग कई बार कहते हैं कि ये विदेशी लोग है, ये संस्कृति नहीं जानते हैं, हमारा ये सभ्यता को नहीं जानते, ये सारा निर्देश उन लोगों के लिए है। And then the Westerners are saying, oh, these people, they're just talking religion, but they're not following anything, और विदेशी लोग ये कहते हैं कि ये भारतीय लोग हैं, ये धर्म का बस बात करते हैं, लेकिन ये धर्म का पालन नहीं करते। So all the instructions are meant for every one of us. लेकिन ये सारा निर्देश सभी के लिए है, हर एक के लिए। Go ahead, Srivas, do your seva. You shut it off first. That's better, right? Again? Okay, cannot do. Somewhere Too much power. I checked everything is off. Okay, so put it back. That's why I was saying why you're disturbing that one. It's working. Bath. इसलिए मैं कह रहा था ये काम कर रहा है तो बस इसको चलते रहने दीजिए। He's trying though. ये प्रयास कर रहे हैं अपना। So you cannot criticize. आप इनका दोष नहीं देख सकते हैं, I can. मैं देख सकता हूँ। Hare Krishna. And then it's very difficult to approach people false ego and try to help them to see their fault. It's a very disturbing job to convince people to look at their own fault. और ये बहुत परेशानी वाला काम है, किसी का अहंकार अगर बहुत बड़ा है, उसकी गलती उसको बताना, उसकी बुराइयाँ उसको बताना, ये बहुत खतरनाक काम है। Even Krishna says, don't disturb these people. यहाँ तक कि कृष्ण ने ये भी कहा है, इन लोगों को परेशान मत करो। Better don't disturb them. बेहतर इनको परेशान In मत their नहीं false किया ego. जाए, क्योंकि उनका अहंकार बहुत But बड़ा है। Prabhupada said, but devotees, preachers, Vaishnavas, they're taking a risk to approach that man in his false ego to try to, help him, enlighten him. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव साधु जो होते हैं वो एक खतरा उठाते हैं इन लोगों के अहंकार को पहुंचने के लिए, ताकि उनको मदद की जा सके। Is all the AC is off? क्या सारे AC ऑफ हैं? Okay. Should we chant a little bit? क्या हमें थोड़ा कीर्तन करना चाहिए? Hare Krishna. Shri Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Bhāgavatam-Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaura Premanande.
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Jashodanandana Jaya Bhajajanandana Jaya Bhajajanandana Jaya Yashodanandana Jaya Bhajajanandana Jaya Bhajajanandana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janbalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya
Mahaprabhu ki Srila Prabhupada ki Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki Samaveda Bhaktivinoda ki Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki Gaura Premananda Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad His Divine Grace Srila A.C.Bhaktivedanta.Swami Srila Prabhupada ki Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajikacharya Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur ki Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasri Shri Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakund, Radhakund, Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Shri Mayapur Navadvip Dham ki Jai, Shri Kshetra Jagannath Puri Dham ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Jamuna Mai ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Tulasi Maharani ki Jai, Shri Shri Gauranitai ki Jai, Shri Shri Krishna Balaram ki Jai, Shri Shri Jagannath Baladev, Lady Subhadra Devi's ki Jai, Shri Shri Radha Madhava ki Jai, Shri Shri Radha Gopinath ki Jai, Shri Shri Radha Gopalju ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki Jai, Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai, Premanam Sankirtan Jagya ki Jai, Transcendental Book Distribution ki Jai, Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru, Shri Gauranga Maharaj. So before we recite Śrīmad-Bhāgavatam, we'll offer some prayers to try to get the mercy, blessing from Śrīmad-Bhāgavatam. तो श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करने से पहले हम कुछ श्रीमद् भागवतम से प्रार्थनाएं करेंगे ताकि हम श्रीमद् भागवतम से कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। It says Śrīmad-Bhāgavatam is non-different from Krishna. कहते हैं श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। Śrīmad-Bhāgavatam is the incarnation of Krishna. श्रीमद् भागवतम कृष्ण के अवतार हैं। So when Krishna wants to speak to our souls, he speaks through Śrīmad-Bhāgavatam. जब कृष्ण हमारी आत्मा से बात करना चाहते हैं तो वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से बात करते हैं। And every advice or instruction in Śrīmad-Bhāgavatam is meant for every single soul. और हर एक सलाह हर एक निर्देश श्रीमद् भागवतम में जो दिया गया वो सभी जीवात्मा के लिए। Don't think, oh, that instruction is meant for him, and oh, that instruction was meant for her. No, every instruction is meant for our soul. ऐसा मत सोचिए कि ये निर्देश उस व्यक्ति के लिए, ये निर्देश उस महिला के लिए है। हर एक निर्देश हर एक आत्मा के लिए है। And it says in Śrīmad-Bhāgavatam, it doesn't look at anybody's face. It's meant for one and all, every soul. और ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवतम किसी के चेहरे की तरफ बात नहीं करता, वो सभी जीवात्मा के लिए है। It's non-different from Krishna means it's completely pure. No material contamination is there, no material desire, nothing material. ये कृष्ण से अभिन्न है, इसका मतलब ये पूरी तरह से शुद्ध है, कोई भौतिक इच्छा किसी भी तरह की भौतिक चीज से संबंधित नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। Only talks about pure loving devotion to Krishna. ये सिर्फ शुद्ध भक्ति की बात करता है कृष्ण से। Everything else more or less is a kaitava dharma, cheating. हर एक कोई कम या ज्यादा एक कर्तव्य धर्म है। And it's explained the only thing Krishna is interested is in Shuddha Bhakti, Prem Bhakti. और ऐसा बताया गया है कृष्ण सिर्फ एक ही मात्र चीज में रुचि रखते हैं, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। And without Mahaprabhu and coming in a mood of devotion, then Krishna will keep himself hidden from us. और महाप्रभु अगर नहीं आते, हमारी इस तरह शुद्ध भक्ति नहीं बताते, प्रेम भक्ति, तो कृष्ण हमसे छुपे हुए रहते। Officially look like we're reading, hearing Bhagavatam, but actually it will never enter inside. बाहर से देखने में लगता हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन हम कभी असल में इसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। We'll just get some intellectual, academic understanding only. हमें कुछ शैक्षणिक समझ प्राप्त हो पाती बस। Okay, so let's offer some prayers. तो चलिए कुछ प्रार्थना अर्पण करते हैं। And then we'll approach Śrīmad-Bhāgavatam. और हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे।
It's not like some mundane book, you just open it up and just, okay, let's see what this book is teaching, you know. ये कोई ऐसी भौतिक किताब नहीं है जिसको खोल के कहें चलिए देखते हैं इस किताब में क्या शिक्षा लिखा है. I'll just apply my intelligence, my experience, my mind, senses to understand what is in that book. मैं अपने मन, अपने बुद्धि, अपना अनुभव, अपना सब कुछ भौतिक लगाकर इसको समझने का प्रयास करूँगा. This किताब के अंदर क्या है? this is revealed scripture. ये प्रकाशित. So every time you hear it, more and more will be revealed to us. तो जितनी बार हम सुनेंगे उतना ज़्यादा हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा. That's why they're constantly reciting. It's endless. निरंतर असीमित रूप से इसका हमेशा चर्चा किया जाता रहे. Not like material book, you read it and you're like, okay, I understood that point. कोई भौतिक किताब के जैसा नहीं है कि आपने किताब पढ़ा और हाँ ये बात अब मैं समझ गया. It's very closed, very limited in understanding because it's a mundane. भौतिक जो है भौतिक चीज़ें बहुत सीमित होती हैं, बहुत कम होती हैं. Are we ready? क्या आप तैयार हैं? Narayanam namaskritya Naram chaiva narotamam Devim saraswatim vyasam Tato jayam udirayet Vede ramayane chaiva Purane bharate tata Adavante chamadye cha Hari savatragiyate Mukam karoti bachalam Pangum langayate girim Yat kripa tamaham bande Shri Gurum dinatarane Padamananda madhavam. Please help me. कृपया मेरी मदद कीजिए. Paramananda he madhava Pandunga luchi makaranda Se makaranda panakari Anande bolo Hari Hari Harinka name bandabela Hari-katha chakadola Se chakadolanka payare Manamo rahu nirantare Manamo nirantare rahu Ha Krishna bali jiva jaho Ha Krishna bali jahu jiva Mote udhara radha dava Mote udhara radha dava Mote udhara radha dava Dhamma prachita kaitavopta paramo nirmatsaranam satam Vedyam astavastu Shivadam tapa jayam nuladam Śrīmad-Bhāgavate Mahamune Krite Kimva Parishvaraha Sadhya Puya Varujate Chakriti Vishushushvis Tatsanat Nigama Kapitalo Galitam Palam Shuka Mukadam Rita Davya Samyutam Bhavata Bhāgavatam Rasam Malayam Muhu Aho Vasika Bhumi Bhavakaha Anato Pasamam Sakshat Bhakti Yoga Madhosaje Lokasha Janato Vidvam Shakre Sattvata Samhitam Yasham Vashyamanayam Krishna Paramapurushe Bhakti Vadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha Śrīmad-Bhāgavatam Yasmin Paramahamsam Makam Mamalam Gyaram Param Giyate Tatra Jnana Vairagya Bhakti Sahitam Nashtamyam Avishkritam Tatshinvan Supatan Vacharana Paro Bhaktya Vimushan Naraha Atto Yam Bhamasutranam Bharatata Vanirnaya Gayatri Vashuruposo Vedata Paribrimhita Sabha Vedetihasanam Saram Saram Samudritam Sabha Vedanta Saram Hi Śrīmad-Bhāgavatam Ishyate
tadrasam vitatriptasya nanyatya sarvati kvachit. Krishna bhakti rasa swarup Śrīmad-Bhāgavata Tate Veda Sasahate Parama Mahata Chari Veda Upanishade Jata Kicho Haya Tarata Lanavyasa Kavila Sanjaya Yesu Chayeru Vishaya Vachana Bhagavate Sevu Shloke Nivandana Jivera Nistara Laki Sutra Karya Vyasa Mayapur Vasishunale Savanasha Jaho Bhāgavata Purāṇa Vaishnavira Stane Ekanta Shayakara Chaitanya Charane Bhagavate yenātmā Seyavana Sama Janme Prabhu Yama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Class Śrīmad-Bhāgavatam ki. So Bhagavatam explains that all the living entities are suffering so many different type of material miseries. तो भागवतम बताता है सभी जीवात्मा किसी न किसी तरह का भौतिक कष्ट भोग रहे हैं यहाँ पे And by linking ourselves in the process of devotional service, then all of this miseries and suffering automatically will become free. अगर हम स्वयं को इस भक्ति की प्रक्रिया से जोड़ दें तो सारे दुख कष्ट जो है अपने आप मुक्त हो जाएंगे. Mass of people, they do not know this. ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते. Therefore, the learned Vyasadeva compiled the Vedic literature, इसलिए व्यास देव ने इस वैदिक ग्रंथ की रचना की, which is in relationship to the supreme truth. जो परम सत्य पे आधारित है. Prabhupada says everyone material world wants to be happy, but we don't know how to be happy. प्रभुपाद बताते हैं भौतिक जगत में सभी लोग खुश होना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है खुश कैसे हो सकते We're हैं. thinking we can be happy, not understanding Krishna, not surrendering to Krishna. हम सोचते हैं हम खुश हो सकते हैं, ना तो कृष्ण को समझे बिना, ना उनको शरणागत This किए is बिना. fundamental mistake. ये हमारी मूलभूत समस्या है. गलती. Instead, all we're getting is anxiety, stress and anxiety and different type of suffering and misery. Nobody's asking for this thing. इसीलिए हमें ये सारी दुख, सारी चिंताएं, सारा तनाव जीवन में प्राप्त हो रहा है. कोई भी इसकी मांग नहीं करता. Then if we hear nicely by giving this submissive aura reception to the Vedic literature, then automatically this fire of lamentation, illusion, fearfulness, anxiety will leave us. तो जैसे आप श्रीमद् भागवतम को विनीत भाव से श्रवण करते हैं, तुरंत ही ये सारी चिंताएं, ये शोक, ये भय से हम पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं. And devotion will be established within the heart and mind. और भक्ति हमारे हृदय, हमारे मन में स्थापित हो जाती है. Just by giving this submissive aura reception to the Vedic literature, especially Śrīmad-Bhāgavatam. सरलता से इस वैदिक ग्रंथ को कोई विनीत भाव से श्रवण करे, विशेष करके श्रीमद् भागवतम. Bhagavatam is called spotless Purāṇa, and it's the most dear to the Vaishnavas.
भागवतम एक वेदांत पुराण है और ये सबसे प्रिय है वैष्णवों को, because it describes pure supreme knowledge of the Paramahamsas. क्योंकि ये शुद्ध परम ज्ञान बताता है परमहंसों का, And that is pure loving devotional service. और ये शुद्ध प्रेममय भक्ति है। Krishna is speaking Bhagavad Gita directly, we discussed last night. कल हम चर्चा कर रहे थे, कृष्णा सीधे सीधे भगवत गीता बताते हैं, And his devotees are talking about the process of pure loving devotional service and how to understand and reach and re-establish that relationship with Krishna. और भक्त इसके बारे में चर्चा करते हैं भक्ति के विषय में, और कैसे भक्ति करके अपना संबंध पुनः स्थापित कर सकते हैं भगवान के साथ। Prabhupada said, anyone who, it says in the verse, Bhagavatam verse, that if you very seriously try to understand it, भागवतम के श्लोक में बताया है, अगर आप बहुत ही गंभीरता से इसको समझने का प्रयास करते हैं and you properly hear and chant it in a mood of devotion, और आप सही तरीके से इसको श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं भक्ति के then भाव by में, Krishna's mercy, mercy of Śrīmad-Bhāgavatam, the end result will be completely liberated. और श्रीमद् भागवतम कृष्ण की कृपा से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। Are we becoming completely liberated? क्या हम पूर्ण रूप से मुक्त हो रहे हैं? No? नहीं, Not happening? नहीं हो रहा। Why that's not happening? क्यों ये नहीं हो रहा? That says that's the result. बस कहते हैं ये फल होता है, And being offered to one and all. और Why ये we're not getting liberated? हम क्यों मुक्त नहीं हो रहे हैं? Why is it? ऐसा क्यों? Navajit? Huh? नवोजित, Is that your name? ये आपका नाम है? Yeah? So, right? So why we're not getting completely purified and liberated? Why is that? क्यों हम पूर्ण रूप से शुद्ध या मुक्त नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्यों? Why is it not working on us? क्यों हमारे ऊपर ये काम नहीं कर रहा? They're not entering into the ear. ये कान के अंदर घुस नहीं रहा है। They're like a medicine. You have to get it into your system. जैसे कोई दवाई है, इसको हमारे शरीर के भीतर डालना होता है। That's submissive our reception. ये है विनीत भाव से श्रवण। But if we have too much pride लेकिन अगर हमारा बहुत and अहंकार we है think we know better, और हम सोचते हैं हम बेहतर too much जानते हैं, falsugo, बहुत बड़ा मिथ्या है, heart filled with so much material desire, material attachment, हृदय भरा हुआ है बहुत सारी भौतिक इच्छाओं आसक्तियों से, and too much attached bodily material platform, और शारीरिक और भौतिक स्तर पे बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, then it says that this kṛtaḥ, Krishna in the form of the transcendental sound, will never enter inside of our ear. तो इसलिए कहते हैं ये कथा कृष्णा इस दिव्य शब्द तरंग के द्वारा हमारे कानों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। It's like taking medicine, just pouring onto the ground. जैसे दवाई लेना और इसको जमीन पे गिराना, And they were saying, oh, this process is not really working. और हम कहते हैं प्रक्रिया काम नहीं कर रहा, And then we're doubting it, why it's not working. You're pouring on the ground, you're not putting in your system, you're not understanding how to get it into your system. हम संदेह कर रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, हम दवाई ले रहे हैं उसको जमीन में गिरा रहे हैं, हम इसको अपने शरीर के अंदर नहीं डाल रहे और हम कह रहे हैं कि ये काम नहीं होता है। Krishna is entering into our system through submissive our reception. कृष्णा हमारे व्यवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर इस दिव्य शब्द ध्वनि के Transcendental माध्यम sound से, vibration. दिव्य शब्द तरंग के Shabda माध्यम Brahma. से, शब्द ब्रह्म। So Krishna comes in the form of holy name तो कृष्णा अपने दिव्य नाम के रूप में आते and a हैं discussion about the Hari-katha Krsna-katha. और हरि कथा कृष्ण कथा की चर्चा के रूप में। So if the speaker and the hearer are in the right mood and mentality, motivation, we get mercy, then Krishna will manifest in that katha. तो श्रोता और वक्ता अगर सही मनोभाव सही मानसिकता के साथ वो कर रहे हैं तो कृष्ण वहाँ पे प्रकट होंगे और वहाँ पे शब्द ब्रह्म के द्वारा प्रवेश करेंगे। My Gurudev used to say, don't think that that this is entering into everybody's ear. मेरे गुरुदेव कहा करते थे ये मत सोचना कि ये सभी के कान के अंदर घुस रहा है, It's being offered to one and all, ये सभी के सामने दिया जा रहा है, but how many are actually listening? लेकिन असल में कितने लोग इसको सुन Hear पा it. रहे हैं, सुन रहे हैं, How many is actually entering inside of the ear, inside of the heart and consciousness? कितने लोगों के कान के अंदर हृदय के भीतर और चेतना के अंदर प्रवेश कर पा रहा है? And he said, very, very few. मतलब बहुत बहुत कम। And he said, why? और क्यों ऐसा? Because your mind is stolen by illusion. क्योंकि आपका मन मोह ने चुरा लिया है। You're thinking about your wife, your son, your daughter, your husband, your mother, your father. You're thinking of all bodily relationships.
अब अपने शारीरिक संबंधियों के बारे में सोच रहे हैं, अपने And माता you're- पिता पत्नी बेटे बच्चे, Heavily attached there on bodily platform. बहुत ही ज़्यादा हम आसक्त हैं अपने शरीर के स्तर पे। So Bhaktivinoda says your mind is stolen by illusion. श्री भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं आपका मन चुरा लिया गया है, मोह में Because चुरा whatever लिया we है। like, whoever we like, whatever we think we love, that's what we're going to think about. क्योंकि जो हमें पसंद है, जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं, हम उसी के बारे में सोचेंगे। So therefore, Krishna in the form of transcendental sound, Śrīmad-Bhāgavatam, holy name, not entering inside. इसीलिए कृष्णा इस शब्द ब्रह्म के माध्यम से अपने हरि कथा श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। So when you hear all of the effects that we should be getting by hearing Śrīmad-Bhāgavatam, and then you say, well, I don't really see all of those effects. I'm not realizing all of those effects. तो जब आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से आपको ये सारे फल प्राप्त होंगे और देखते हैं आपको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से ये फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, Shouldn't we say, oh, that sounds fantastic, why that's not happening to me? तो क्या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सुनने में बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों नहीं रहा? That's also self-realization. It's not happening to me. I'm realizing the reality of the situation. ये भी एक आत्म साक्षात्कार है, हम अपने वस्तु की स्थिति को सच्चाई को जान रहे हैं, मेरे साथ ये सही, मेरे साथ काम नहीं हो So पा रहा है, why? क्यों ऐसा? And of course, false ego and pride, we never think it's us. We're doing everything perfect. अवश्य मिथ्या अहंकार में और दंभ में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, We're हमारे अंदर कोई गलती devotee, नहीं। we love Krishna, we're so sincere, we're completely surrendered. हम भक्त हैं, हम बहुत गंभीर हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमारे पास भक्ति है कृष्ण के लिए। Everything belongs to Guru and Krishna, nothing is mine. मेरा सब कुछ गुरु कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। And we're thinking like this. We may even say like this. हम ऐसा सोचते हैं और हम ऐसा बोलते भी हैं। Right? So the problem is not from our side, we're thinking. तो हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। So हम there तो सही must सोच be रहे हैं। something wrong with the Guru. अवश्य गुरु के साथ कुछ गलती है। Right? There must be something wrong. This knowledge doesn't really work. अवश्य ये ज्ञान जो है काम नहीं आता है। I had one devotee telling, this doesn't really work. मुझे याद है एक भक्त ने मुझे कहा कि असल में ये काम नहीं करता है। Of course, it's worked for anyone who's applied the science. अवश्य हर उस व्यक्ति के लिए काम किया जिसने इस विज्ञान को लागू किया। And the Śrīmad-Bhāgavatam is just a series of personalities who applied Krishna's instruction in the process of bhakti, and they achieved perfection. और पूरे श्रीमद् भागवतम में क्रमानुसार भक्तों का अनुभव ही बताया गया है कि कैसे उन्होंने इस भक्ति की प्रक्रिया को लागू किया और उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया इस प्रक्रिया के So माध्यम से। whoever applies the instructions, they achieve perfection. Why we're not achieving perfection? तो जिसने भी इस निर्देश को लागू किया उसको सिद्धि प्राप्त हुई, हमें क्यों सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है? Because too many doubts, क्योंकि बहुत ज़्यादा संदेह है, too much bodily conception of life, बहुत ज़्यादा शारीरिक स्तर पे हमारा जीवन है, too much attachment to bodily relations, बहुत ज़्यादा आसक्ति है हमारे शरीर के सगे too much संबंधियों से, attachment to our materialistic plans, desires. बहुत ज़्यादा आसक्ति है हमारी भौतिक इच्छा, भौतिक योजनाओं से, So we're distracted. हम पूरी तरह से भटके हुए हैं। So we're not really listening submissively, attentively. तो हम असल में विनीत भाव से और ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं कर रहे हैं। Because it says we're on the chariot of the mind, right? On that plane just flying all over the three worlds, right? जैसे कहते हैं मन के रथ पे हम मन के जो विमान है उस पे उड़ रहे हैं, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं। Whatever we like, whatever we're attached to, whatever is our plan, the mind is just automatically just going there. जो भी हमें पसंद है, जिस चीज़ से भी हम प्रेम करते हैं, कृष्ण जो है उसी जगह उसी के साथ पूरे दुनिया में घूम रही है। So not really listening. तो हम असल में सुन नहीं रहे हैं। And then if we are listening, we're listening to find fault. और जो हम सुन रहे हैं वो हम सुन रहे हैं दूसरों की बुराइयाँ। Let's see, what can this person say that I don't already know? चलिए देखते हैं ये व्यक्ति मुझे क्या बताएगा जो मैं पहले से नहीं जानता। That's a pride. ये है अहंकार। What can he say that I don't already know, that I didn't already study and realize? ये मुझे क्या बताएंगे जो मैं पहले से नहीं जानता या मैंने जो पहले से पढ़ा नहीं, जो मैंने पहले से अनुभव नहीं किया है। Sometimes I think for Indian body devotee, it must be very difficult to listen to, some dancing white elephant telling about, Shuddha Bhakti. कभी-कभी मैं सोचता हूँ ये भारतीय भक्तों के लिए बहुत मुश्किल होता होगा किसी नाचते हुए सफ़ेद हाथी से हमारी सभ्यता के बारे में सुनना। Right? It's like, he's telling us about our religion and our culture and our family, and really we have to tolerate this? Who is this guy? Who is this person? ये हमें संस्कृति के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमें बताएगा।
Right? Because you're in bodily concept of life, right? क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे हैं, We have a skin disease. हमारे पास ये चमड़े का चर्म रोग है हमें। One time my Gurudev, he was talking to one Indian gentleman. मुझे याद है एक हमारे गुरुदेव एक भारतीय सभ्य व्यक्ति से बात कर रहे थे They were speaking in Hindi. और वो हिंदी में बात कर रहे थे And I was just sitting there chanting. और मैं बस बैठ के वहाँ I जप कर रहा I था don't understand Hindi. क्योंकि मैं हिंदी समझता So I नहीं, don't know what are they talking about. मुझे पता नहीं वो क्या बातें कर रहे थे, But I'm just happy being next to my Gurudev. लेकिन मैं बस खुश था। I don't अपने care गुरुदेव what के he's पास बैठा talking हूँ। about. मैं ये He नहीं can talk सोचा था। about whatever he wants to talk about. I'm happy being with him. मैं बहुत खुश था उनके साथ बस रहने के लिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस चीज़ के बारे में बात करते रहे। And then he started speaking the English and he said, you see, I'm trying to give these higher teaching, but these people, especially these Western people, they're not accepting it from me. तो उन्होंने फिर अंग्रेजी में बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैं जो है सबसे ऊंचा चीज़ देने का कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, और विशेष करके ये जो विदेशी लोग हैं, पाश्चात्य देश के लोग, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये मेरे चमड़े के रंग को देख रहे हैं। So because I have this skin, this brown skin, the prejudiced people, so they're not nicely taking it from me. They're not accepting it, what I'm telling. तो क्योंकि मेरे चमड़े का रंग भूरा है, तो इसीलिए ये पाश्चात्य देश के लोग मेरी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। So if we're in bodily platform, we'll have too much prejudices there. तो अगर हम इस तरह के शरीर के स्तर पे हैं, तो हमारे अंदर बहुत अहंकार होता है। Right? Oh, I don't like white people. I don't like Westerners. You know. और मुझे ये सफ़ेद लोग पसंद नहीं है, मुझे ये पाश्चात्य देश के लोग पसंद They नहीं। call rice bag. What? They call the foreigners, they call them rice bag. They call them rice? Rice bag. You know this bag of rice? Bag of rice? Yeah. You're calling us bag of rice? That's the problem. You think I'm a bag of rice. When are you going to hear about Śrīmad-Bhāgavatam from me, you know? ये आप लोगों की समस्या है। भारत में लोग सोचते हैं ये विदेशी लोग जो है जैसे चावल का बोरा है, वैसे सफ़ेद दिखता है वैसा। तो अगर आप सोचेंगे यहाँ चावल का बोरा आपके सामने बैठ के शुद्ध भक्ति के बारे में क्या बात करें? No wonder you're having problem, you know? तो इसलिए वो समझ में आ रहा है कि कैसे आप लोगों की समस्या है। But if Krishna wants a bag of rice to speak the absolute truth to you, he can do it. अगर कृष्णा चाहते हैं कि वो चावल का बोरा आपको परम सत्य के बारे में बताए, तो कृष्णा करवा He सकते हैं can उसके do and माध्यम undo से। anything. वो कुछ भी कर सकते हैं। He's supreme mystic. वो परम योगी हैं Right? He can make impossible possible. और असंभव को संभव बना सकते हैं। So unless we come to soul platform, there's too much prejudices there. तो जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे, तो इस तरह का हमारे अंदर बहुत दम्भ होता है। This bodily platform, oh, he's my friend, he's my enemy. You know, he's one of mine, he's outsider. ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है। All based on the bodily platform, where are you born? ये सारे शरीर के स्तर पे, मैं कहाँ जन्म हुआ उसके आधार पे। Right? You're from Nepal, is it? आप नेपाल से हैं? Right? So you think the Indian people that live in India, do they accept you so easily? You're from Nepal, isn't it? तो ये भारत में जो लोग रह रहे हैं, आपको इतनी आसानी से स्वीकार करते हैं आपकी बातें? आप तो नेपाल से हैं। Okay, he's Indian, but he's not like really Indian, you know. ये है भारतीय, लेकिन असल में भारतीय नहीं है। Or you're in the Mayapur, right? And the Bengalis, right? You know, you don't speak Bengali, right? आप मायापुर में हैं और आप बंगाली नहीं बोलते हैं, Right? So do they accept you like just like another Bengali brother? तो फिर क्या वो आपको ऐसे बंगाली भाई के अपने रूप में मानते हैं आपको? Right? Then you're trying to speak the Bengali, right? And you're improving. और आप जो है बंगला में बात करने का प्रयास कर रहे हैं और आप थोड़ा बेहतर भी कर रहे हैं, But you can't say it's like perfect Bengali, right? लेकिन आप नहीं कह सकते आप एकदम शुद्ध बंगाली बात कर रहे हैं। So there's always some prejudices there तो हमेशा इस तरह कुछ न कुछ on the bodily पक्षपात platform. होता है, शरीर के स्तर पे पक्षपात हम करते हैं। So the real Bhaktivedanta says the real United Nations means on soul platform, transcendental platform. तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं असल संयुक्त राष्ट्र है आत्मा के स्तर पे, दिव्य स्तर पे। If you go to the United Nations, you just plant your flag from your country, then where is United Nation? अगर आप संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं, वहाँ हर एक राष्ट्र अपना झंडा लेके काटता है, तो वहाँ पे क्या है ये संयुक्त राष्ट्र? That means everybody fighting according to their flag, isn't it? इसका मतलब सभी अपने झंडे के आधार पे लड़ाई कर रहे हैं। And it says, Prabhupada said, if
why there are so many revolutions to history is because that you're not accepting same authority. और प्रभुपाद कहते हैं इतिहास अगर आप देखेंगे हमेशा एक क्रांति के बाद दूसरी क्रांति क्यों हुई, क्योंकि सभी लोग एक अधिकारी को स्वीकार नहीं करते. So if we don't agree and accept Krishna and Krishna's knowledge as the supreme authority, then there's going to be revolution, disagreement, a conflict, isn't it? तो अगर हम कृष्ण के ज्ञान को अधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे और लागू नहीं करेंगे, उसको परम अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमेशा कुछ न कुछ मतभेद होगा, कुछ न कुछ लड़ाइयाँ होगी. Even transcendentalists are fighting with each other. यहाँ के जो दिव्य पथ पर हैं वो भी And personalism. निराकारवादी साकारवादी के साथ लड़ाई. The yogis are fighting. Who's the best yogi? और उनके बीच युद्ध है कि कौन ज़्यादा बेहतर योगी है. Right. So on material platform, bodily platform, there's so much prejudice, pride, and false ego. So there's always this type of misunderstanding and disagreement. तो जब भौतिक और शारीरिक स्तर पे हम रहते हैं, जब कोई दम्भ होता है हमारे पास, तो हमेशा कुछ न कुछ पक्षपात करते हैं, हमारे पास असहमति होती है और हमारे बीच मतभेद पैदा होते हैं. So Gurudev said, because they're prejudiced, because of their skin color, they cannot hear the truth, what I'm trying to tell to them. तो मेरे गुरुदेव कहा करते थे क्योंकि वो पक्षपात करते हैं मेरे चमड़े के रंग की वजह से, इसलिए वो परम सत्य मुझसे सुन नहीं पाते हैं. So we should consider, what are we saying? Is it coming from Guru, Sadhu and Shastra? Is it absolutely correct? That should be accepted. You should not say, oh, out of your prejudice, what can this bag of rice, तो हमें ये नहीं सोचना, हमें बस ये विचार करना चाहिए जो कहा जा रहा है वो कृष्णा का सत्य है, परम सत्य कहा जा रहा है. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चावल का बोरा हमें क्या बताएगा. I remember one time I tried to get in on the bus in the airport, and all the Indian businessmen are not letting me on the bus. I have all of the bags, मुझे याद है एक बार मैं बस में सफ़र करने का प्रयास कर रहा था भारत में, और बहुत सारे भारत के वहाँ पे जो बिजनेसमैन थे वो मुझे बस में चढ़ने नहीं दे रहे थे. And I'm wearing devotional clothes. और मैंने भक्ति जैसे ये कपड़े पहने. And I'm just trying to step up onto the bus. They're not allowing me any room to get on the bus, और मैं बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था और मुझे वो बस में घुसने के लिए जगह नहीं दे रहे थे. And I just traveled like 24 hours, so I was tired. I'm just trying to get on the bus, last part of the trip. तो मैं 24 घंटे सफ़र करके मैं पूरी तरह थक गया था और मैं अपने सफ़र का सबसे आखिरी पड़ाव में था, तो मैं बस में चढ़ने का प्रयास कर रहा था. And I'm not asking them even to help me. I'm just saying, let me just get on the bus. मैंने किसी को बोला नहीं कि आप मेरी मदद कीजिए, मैंने बस उनसे मैं प्रयास कर रहा था कि मुझे बस में घुसने की जगह दीजिए. Then they're like acting like, no, why we should let you on the bus? और फिर वो लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे, हम तुमको बस में घुसने नहीं देंगे. So then, I just little bit pushed myself onto the bus. तो मैंने किसी तरह धक्का देके मैं बस में घुस गया. I tried to do it nice way. मैंने अच्छे तरीके से प्रयास किया. Then I had to do it more like, stronger way. और मुझे थोड़ा मजबूती से फिर प्रयास करना पड़ा. So they don't like that. तो उनको ये पसंद नहीं आया. And then I started saying to them out loud, oh, so this is what Indian culture has become? तो मैंने उन सबको चिल्लाकर कहा कि क्या ये भारतीय संस्कृति ये ऐसी बन चुकी है अब? This is your Indian Vedic culture? क्या ये आपका वैदिक सभ्यता है? Oh, that man, he got so angry at me. He wanted to beat me up, Don't talk to me about culture, वो व्यक्ति मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया असल में, और फिर वो मुझे पीटना चाहता था. उन्होंने कहा कि तुम सभ्यता संस्कृति के बारे में हमसे बात मत करो. How dare you talk about culture? You're from America. What culture is that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सभ्यता संस्कृति के बारे में बात करने की? It's like 250 years old country. What culture you have there? 250 साल पुराना देश है, वहाँ क्या सभ्यता है हम लोगों के पास? So much bodily consciousness means so much prejudice is there. इतना सारा शारीरिक चेतना है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पक्षपात है. So maybe it's also difficult if you're in Indian body to accept this from us. तो हो सकता है ये भारतीय शरीर में जो लोग हैं उनको मुश्किल होती होगी इस सत्य को स्वीकार करने में मुझसे. But I tell you, I learned this from a Vaishnava who's in Indian body. और मैं बस यही बात बार-बार कहता हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें उन वैष्णव से सीखी जो स्वयं एक भारतीय शरीर में थे. And what I'm trying to share with you is what I heard and learned from him. और जो मैं आपसे बांटने का प्रयास कर रहा हूँ वही जो मैंने उनसे सुना और जो मैंने साक्षात्कार. I'm not giving my opinion. मैं अपना विचार नहीं रखा हूँ. I'm not making up some philosophy, some point. मैं कुछ अपना सिद्धांत, अपनी बातें नहीं कहना चाह रहा आपके सामने.
what perfect knowledge from perfect source. You have to hear it, understand it, assimilate it, get the benefit, realization from it, and then try to explain as it is. That's all. ये पूर्ण ज्ञान आपको पूर्ण श्रोत से श्रवण करना चाहिए, इसका साक्षात्कार करना चाहिए, इसको एकत्र करना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ विकसित करनी चाहिए और फिर इसी समझ को और अपने साक्षात्कार को अन्य लोगों के बीच बांटना चाहिए. So that's why it says attentive, submissive oral reception is required. इसलिए कहते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक और विनीत भाव से श्रवण करने की जरूरत है. In order for Krishna to manifest in that transcendental recitation, transcendental sound, in order to enter into our system, in order to get the purification and all the spiritual benefits that comes by hearing and chanting about Śrīmad-Bhāgavatam. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम चर्चा करने समय हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि कृष्णा वहाँ प्रकट हो, हमारे भीतर वो दवाई के रूप में प्रवेश करे ताकि हमें शुद्धिकरण प्राप्त हो सके और हमें वो सारा फल प्राप्त हो सके जो श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के माध्यम से प्राप्त होता है. And thank you for your patience letting me speak again. I spoke so long last night. और मुझे धन्यवाद दोबारा मौका देने के लिए. मैंने पिछली रात्रि काफ़ी लंबे समय तक मैंने बात किया और आपने फिर से मुझे आज मौका दिया है कुछ बातें करने की. But I can't speak later today, so I felt that I should do my seva and I should try to speak Hari-katha Krsna-katha for all of our benefit. लेकिन मैं बाद में बातचीत नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं सोचा कि मैं पहले अपनी सेवा कर लेता हूँ ताकि अन्य लोगों की मदद कर सकूँ और स्वयं की मदद कर सकूँ. That's all we're trying to do. तो ये हम करने का प्रयास कर रहे हैं. So be simple. तो सरल हो जाइए. Don't think, oh, we already know everything. What can this person say? He already said everything. आप ये मत सोचिए कि व्यक्ति क्या कहेगा, ये पहले ही कह चुका है जो इनको कहना है. He already said everything he knows. ये पहले ही सब कुछ कह चुके हैं जो इनको पता था. Sometimes one person, he was telling why devotee did not like this discussion. एक बार मुझे एक व्यक्ति कह रहे थे भक्त जो है इस चर्चा को पसंद क्यों नहीं करते हैं. And what we're emphasizing. और हम किस बात पे जोर दे रहे हैं. And he's saying, why is always talking about the getting mercy? तो वो कहते हैं ये हमेशा कृपा पाने के बारे में क्यों बात करते रहते हैं. It's like too much, like always about mercy, getting mercy. हमेशा कृपा के बारे में बात करते हैं, कैसे कृपा प्राप्त करना है. We get mercy and blessing from Krishna and Krishna's pure Vaishnava Premi Bhakta, you'll get and understand everything. अगर आपको कृष्णा से, कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त से कृपा प्राप्त होगी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा और आप सब चीज समझ पाएंगे. The whole thing is based on getting mercy. सब कुछ आधारित है कृपा पे. Mercy like a petrol, it's like gasoline, benzene. ये कृपा पेट्रोल के जैसा है, ईंधन के जैसा है हमारे लिए. You want to just drive around in your vehicle with no fuel? क्या आप अपनी गाड़ी में चलते रह सकते हैं बिना किसी ईंधन के? Then you'll be sitting somewhere broken down saying, maybe we should have talked about the fuel, और कहीं आप गाड़ी रोक के फिर साइड में बैठे रहेंगे और कहेंगे हो सकता है हमें ईंधन के बारे में बात कर लेनी चाहिए थी पहले. Okay, you with me? Yes. आप मेरे साथ हैं? Are you awake? क्या आप जगे हुए हैं? Sanatan? I was thinking this will be a short and sweet class. That's what I was thinking. मैं सोचा था ये छोटा और मीठा क्लास होगा. But I'm so happy to see you and I'm just expressing everything to you. I hope you don't mind. तो मैं आप लोगों को देख के बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं पूरे खुलकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ. मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात I hope you have patience with me. मुझे उम्मीद है आप लोगों को धैर्य है मेरे साथ. Overlook my faults. मेरी बुराइयों के ऊपर. I'm not a scholar. मैं कोई विद्वान नहीं हूँ. I don't know Sanskrit. मैं संस्कृत नहीं जानता. I'm trying my best. Try to see the effort, मैं प्रयास कर रहा हूँ किसी तरह से. I'm sure there's mistakes are there. Try to oversee that. Pray for me. मुझे उम्मीद है बहुत सारी गलतियाँ होगी पर इसके ऊपर देखने का प्रयास कीजिए. I'm trying. प्रार्थना कीजिए. मैं प्रयास कर रहा हूँ. Do you see that I'm trying? क्या आप देख रहे हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ? Huh? What's your name? आपका नाम क्या है? Dulal. Achha. Nice to meet you. अच्छा लगा आपसे मिलकर. He's trying to figure out what's going on here, ये पता लगाने का प्रयास करेंगे यहाँ हो क्या रहा है. This seems like some different kind of presentation. कुछ अलग ही प्रस्तुति दी जा रही है. It's not so formal, right? ये कुछ औपचारिक क्लास जैसा नहीं हो रहा. But we're discussing amongst friends. We're trying to understand it. लेकिन हम दोस्तों के बीच चर्चा कर रहे हैं और हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं. Right? ठीक है. Indian system is you just sit there and the teacher just pounds you with the information, right? भारतीय व्यवस्था ऐसी है कि टीचर शिक्षक वहाँ आकर बैठता है और आपको पूरा
जबरदस्ती आपको सब कुछ सिखाता रहता है एक के बाद right? एक। And just like you write it down, you know. और आप बस लिखते रहते हैं बैठ के वहाँ। Right? No question, no challenge, no, really just accept it. Just sit there and accept it, isn't it? कोई सवाल नहीं उठाना है, कोई जवाब नहीं देना है शिक्षक को, बस आप स्वीकार करते जाओ जो शिक्षक सिखा रहा है। And this type of learning is like a road to learning, right? और इस तरह की शिक्षा जो है जड़ में है हमारे। So it makes everybody very narrow. तो सभी को बहुत सकरा बना देता है, सकरे सोच वाली। They can't think outside of the box, वो बक्से के बाहर सोच नहीं पाते हैं। right? This drives me crazy ये मुझे पागल when I बनाता have to है। interact with people like this. कि मुझे ऐसे लोगों के साथ They're like बातचीत करनी robots. This is what we were told, this is the policy, this is how we have to do it, right? There's no person there, there's no conversation. तो वो अपने अपने बॉक्स में रहते हैं, हमें इस तरीके से बात करनी है, हमें ये सिखाया गया, इसी तरह से हमें काम करना है, ये हमारी पॉलिसी है। उस बक्से के बाहर वो सोचते ही नहीं है। Right? They just make like a computer, like a robot. जैसे किसी कंप्यूटर या रोबोट के साथ बातचीत करना। We don't want robots. हमें रोबोट नहीं चाहिए। Yes, we are devotees of Krishna. कृष्ण We are members of ISKCON. हम कृष्ण ISKCON के मेंबर हैं। We worship the GBC. हम GBC की पूजा करते हैं। God bless them, but we're here for Krishna consciousness, भगवान उनका भला करे, लेकिन हम यहाँ कृष्ण भावनामृत के लिए आए हैं। If somebody helps you to become Krishna conscious, then I love you, I appreciate you. अगर कोई आपका कृष्ण भावनामृत बनने के लिए मदद कर सकता है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात से। You know, it's funny when you say GBC, it's like the first time I was preaching in Russia. जब मैं GBC के बारे में जब मैं बात करता हूँ, जब पहली बार मैं रशिया में प्रचार कर रहा था, They had Soviet Union, the communism, right? तो वहाँ पे सोवियत संघ था जो कि समाजवादी And they had this पार्टी very था। heavy totalitarian dictator, Stalin. और वहाँ के जो लीडर थे वो स्टालिन थे, नेता। It says that many people, they didn't survive that regime. Let's put it like that. और हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनकी राजनीति में जीवित नहीं रह पाए। So some people say 30 million people died, maybe 50, 60, 80 million people. A few people left their body because of this fine gentleman. तो इस सभ्य व्यक्ति की वजह से कम 30 लाख, कुछ लोग कहते हैं 80 लाख ऐसे लोग जो है अपनी जान गंवा दी। But I'm sure his mother loved him. मुझे उम्मीद है उनकी माँ जरूर उनसे प्यार करती है। Anyway, so when I came, I studied a little bit about when I was going to Russia, just to try to get some understanding about history and, something about how they have lived their life and what they went through, all of that, right? तो जब मैं पहली बार वहाँ गया तो मैं वहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था, वहाँ के लोगों ने कैसे अपना जीवन यापन किया, इसके बारे में मैं इतिहास भी मैं थोड़ा पढ़ रहा था रशिया जाने से पहले। So I remember I started talking about Stalin, just like openly, like freely talking about Stalin. तो मुझे याद है मैं क्लास में पूरे खुल के और खुले तरीके से मैंने स्टालिन के बारे में बात करना शुरू किया। And everybody was like this. और सब कुछ जो है पूरे इस तरह से डरने लगे सब लोग। They were so like fearful and so like this is something you don't talk about, वो इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे, कहते थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात We all नहीं की know, जानी but this is not meant for like open discussion, चाहिए। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन खुले में इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। So when I come and I say GBC, everyone's like, तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ और जैसे मैं GBC कहता हूँ, सभी लोग तुरंत ही भयभीत हो जाते हैं। it's like a taboo, it's like you don't talk about that, ऐसा है कि जैसे जिसको समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। So why is everyone so fearful? तो सब लोग इतने डरते क्यों हैं? If they're premi bhaktas, Shuddha bhaktas, most dear devotees of Lord Krishna, why should there be any fear? अगर वो शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, कृष्ण के प्रिय भक्त हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? Krishna says those devotees who preaching about me and bringing people to me, they're most dear to me. कृष्ण बताते हैं जो मेरा प्रचार कर रहे हैं, लोगों को मुझ तक लेकर आ रहे हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। So why so much fear and anxiety? तो इतना भय क्यों होता है? That's just an interesting concept तो ये बहुत रुचिकर विषय है to consider. विचार करने के लिए। So we should get to the verse because time is going by. श्लोक पे आते हैं क्योंकि समय जल्दी बीत रहा है। What else did you have planned today? और आपके 8 दिन में क्या योजना है? Do you have open calendar? Yes.
You have open day or do you have some other appointment? क्या आपके कैलेंडर में आपने कुछ दिन तय कर रखा है? आपके पास कोई और अपॉइंटमेंट है कहीं जाने के? Am I being too slow? क्या मैं बहुत धीरे-धीरे घुस जा रहा हूँ? Am I not fitting into this formal box properly? क्या मैं आपके जो औपचारिक बॉक्स में सही तरीके से फिट नहीं हो रहा हूँ? आपके समय के घड़ी के अनुसार? What do you think, Dulal? आप क्या सोचते हैं दुलाल? Am I fitting into the box nicely? क्या मैं आपके बक्से में अच्छी तरह फिट हो रहा हूँ? I'm big. It's tough to stuff me in the box. You know what I mean? मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बक्से में It's डालना really difficult. I was in there for a while. It was very unnatural. You know what I mean? थोड़े समय के लिए बक्से में डाल सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक स्वाभाविक नहीं है मेरे लिए। मैं बाहर I had to break out. You know? तोड़ के बाहर आ जाऊँगा बक्से में। I got liberated. You know? So, all right, let's. Krishna. I had this verse already prepared from yesterday. I don't know where it's going. We went off the tracks somehow, you know. I don't know exactly where, but we're going to try to bring it back onto the tracks. तो हम अपने रास्ते में फिर से वापस आ जाएंगे। इस श्लोक पे मैंने कल रात ही तैयारी की थी, तो मुझे पता नहीं हम किस डायरेक्शन दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हम अपने सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। So this different type of learning experience. तो बहुत तरह की चीज़ें हम सीखेंगे। They call it interactive. इसको कहते हैं आपसी। Right, we're having an interactive learning experience in conversation amongst friends. How's that sound? हम एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर अपने मित्रों के साथ बातचीत करके वार्तालाप करके सीखने का प्रयास करें। If we discuss like that, then we can maybe try to understand it, इस तरह से like really understand it. इस तरह से हम चर्चा करेंगे तो हम असल में इस चीज़ को समझ पाएंगे। Then it becomes conversant. तो ये जो है एक वार्तालाप, सही वार्तालाप हो पाएगा। Not like you study, you know, the night before the exam and then you just cram it all into your head and next day you just put it all down and then that night you're like forget exactly anything that you learned. It's not like this. तो जैसे आप किसी एक परीक्षा के पहले पूरी रात पढ़ाई करते हैं और अगले दिन जाके जो आप जानते हैं सब कुछ लिख देना चाहते हैं वहाँ पे और उसके बाद सब भूल जाना चाहते हैं। Like regurgitating like a knowledge. जैसे बस किसी तरह का ज्ञान बस बाहर निकाल रहे हैं। This type of knowledge will give you indigestion. You know? इस तरह का ज्ञान आपको अनपच कर देगा। This is food for the soul. ये आत्मा के लिए भोजन है। It's eternal knowledge. ये नित्य ज्ञान है। Should we try to read a verse? तो हमें एक श्लोक पढ़ना चाहिए। Did I talk too much? You still have patience? क्या मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ? आपके पास थोड़ा धैर्य है? All right, let's take a vote. तो चलिए एक वोटिंग। How many people want me to read a verse and continue with this discussion? कितने लोग चाहते हैं मैं श्लोक पढ़ूं और इतने चर्चा? How many of you are not sure? और कितने लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते इस बात को? How many of you are deathly opposed? कितने लोग जो है अपनी मृत्यु पे भी गुजरना चाहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ? And if you're deathly opposed, then please leave now. You have permission, no offense. अगर आप मृत्यु को भी रख के विद्रोह करना चाहते हैं तो आप यहाँ अभी No one will be upset with you. मुझसे नाराज मत होइए। Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You guys are fired up. I like that. You're giving me some, encouragement. आप लोग पूरे जोश में हैं, आप लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। So we're reading from the Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, chapter 2. तो प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय से हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम। This is one of my favorite chapters. Everything to me is mentioned here. ये मेरा बहुत पसंदीदा अध्याय है, इसमें सब कुछ मुझे बहुत ही पसंद है। Because it's talking about divinity and divine service. क्योंकि ये दिव्य और दिव्य सेवा के बारे में बात करता है। So Krishna and loving devotional service to Krishna. That's everything. तो कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ये सब कुछ है इसमें। And we're going to read text number 5. और हम श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे। Please repeat. कृपया दोहराइए। Munayaḥ, sādhu, pṛṣṭaḥ, aham, bhavadbhir, loka-maṅgalam, kṛtaḥ, Krishna,
sampraśnaḥ, yena, ātmā, suprasīdati, munayaḥ sādhu pṛṣṭo bhavadbhir loka-maṅgalam, kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno, yenātmā suprasīdati, munayaḥ sādhu pṛṣṭo bhavadbhir loka-maṅgalam, kṛtaḥ kṛṣṇa-sampraśno, yenātmā suprasīdati, munayaḥ. O sages, sādhu, this is relevant. ये प्रासंगिक है. Sometimes I change it up and then he has to adjust, so he gets like, he's not used to adjusting. कभी-कभी मैं कुछ चीजें बदल लेता हूँ तो ये उसके उतना आदी नहीं है. कुछ चीजें मैं बदल लेता हूँ. ये Indian system, just follow it, right? ये भारतीय व्यवस्था है, बस पालन करो. pṛṣṭa, question. सवाल. Aham, myself. स्वयं. Bhavadbhir, by all of you. सभी के द्वारा. Loka, the world. जगत. Mangalam, welfare. मंगल. Yat, because. कारण. Kṛtaḥ, made. बनाया. Is that like creation? Or? Krishna, the personality of Godhead. पुरुषोत्तम भगवान. Bhagavan. Sampraśnaḥ, relevant question. प्रासंगिक प्रश्न. Yena, by which. जिसके द्वारा. ātmā, the self. स्वयं. Suprasīdati, completely pleased. पूर्ण रूप से प्रसन्न. Translation and purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का. O sages, I have been justly questioned by you. हे ऋषियों, मुझे प्रश्न किया गया आपके द्वारा. Your questions are most worthy आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं. because they relate to Lord Kṛṣṇa क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं. and so are of relevance to the whole world's welfare. और ये सभी जगत के मंगल के लिए हैं. Only questions of this sort और एक ही सवाल है इसमें. are capable of completely satisfying the self. योग्य है पूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए. Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य. Since it has been stated herein before that in the Bhāgavatam the absolute truth is to be known. क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है श्रीमद् भागवतम में परम सत्य को जाना जाना चाहिए. Therefore the questions of the sages of Naimisharanya, they are proper and just. इसीलिए नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा उठाए गए सवाल बहुत ही सही है. Because those questions, it pertains to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि ये इन सवालों का संबंध परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से है. The absolute truth. जो परम सत्य है. In the Bhagavad Gita 15:15, और भगवद गीता 15वें अध्याय 15वां श्लोक, the Personality of Godhead says that in all the Vedas there is nothing but the urge for searching after Him, Lord Kṛṣṇa.
उन्होंने बताया है भगवान ने उस श्लोक में कि सारे वेदों के माध्यम से बस मुझे ढूंढना है। Krishna says in Gita, by all the Vedas I am to be known. कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना। So the purpose of all Vedic knowledge is to know Krishna, और सारे वैदिक ज्ञान का कारण है कि कृष्ण को to जानना, surrender to Krishna, कृष्ण को and शरणागत love करना, Krishna. कृष्ण से That's the प्रेम point करना। of all the Vedic knowledge. ये सारे वैदिक ज्ञान का मुख्य बात है। Thus, the questions that pertain to Krishna are the sum and substance of all Vedic inquiries. इसीलिए जो भी सवाल कृष्ण से संबंधित पूछे जाते हैं ये सारे वैदिक जिज्ञासा का मुख्य बिंदु है। The whole world is full of questions and answers. ये पूरा जगत सवाल और जवाब कर रहा है। Everyone's asking questions and giving answers. हर कोई सवाल पूछ रहा है और कुछ जवाब मांग रहा The है। birds, the चिड़िया, beasts, and the men are all busy in the matter of perpetual questions and answers. पक्षी, मनुष्य, पशु सभी लोग पूर्ण रूप से हमेशा व्यस्त हैं सवाल और जवाब कर ढूंढने में। In the morning, the birds in the nest, they become busy with questions and answers. सुबह उठते ही पक्षियाँ अपने घोंसलों में हमेशा चिंता में रहती हैं, अपने सवालों और जवाबों को ढूंढती रहती हैं। And in the evening also, the same birds, they come back again and then they become busy with questions and answers. और पुनः वो पक्षी शाम को वापस अपने घोंसलों में आते हैं और फिर से व्यस्त होते हैं अपने सवालों और जवाबों में। The human being, unless he is fast asleep at night, is busy with questions and answers. मनुष्य जब तक वो पूर्ण गहराई से रात्रि में ना सो रहा हो, वो दिन में हमेशा अक्सर व्यस्त रहता है सवालों और जवाबों में। The businessmen in the market, they're busy with questions and answers. व्यापारी बाजार में हमेशा व्यस्त रहता है सवाल से जवाब से। And so also the lawyers in the court, और इसी तरह वकील भी कोर्ट में, and the students in the schools and the colleges, और छात्र विद्यालय और विश्वविद्यालयों में, the legislators in the parliament, और जो मंत्री हैं वो मंत्रालय में, they are also busy with questions and answers. सभी व्यस्त हैं सवाल और जवाब में। And the politicians and the press representatives, they are all busy with questions and answers. तो ये राजनीतिज्ञ और ये जितने पत्रकार हैं ये भी व्यस्त हैं सवालों और जवाबों को। The whole day they're asking questions and getting answers, पूरे दिन वो सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं। or giving answers. हम यहाँ So it's all जवाब देते हैं। questions and answers all day long, everybody, in every species of life. सभी योनि में, सभी जगह, सभी समय जो लोग सवाल और जवाब कर रहे हैं। Think about it. सोचिए इसके बारे में। Although they go on making such questions and answers for their whole lives, यद्यपि वो पूरा जीवन इस तरह सवाल जवाब करते रहते हैं, they are not at all really satisfied. वो कभी संतुष्ट नहीं होते। Satisfaction of the soul can only be obtained by questions and answers on the subject of Krishna. आत्मा की संतुष्टि तभी प्राप्त हो सकती है जब ये सवाल और जवाब कृष्ण से संबंधित किए जाएं। Krishna is our most intimate master, friend, father, or son. कृष्ण हमारे सबसे करीबी मित्र, हमारे पिता हैं। An object of conjugal love. और ये प्रेम, युगल प्रेम के विषय हैं। So forgetting Krishna, we have created so many objects of questions and answers. तो कृष्ण को भूल के हमने बहुत सारे विषय वस्तु ढूंढ ली है सवाल और जवाब करने की। But none of those questions and answers are able to really give the self, the soul, complete satisfaction. लेकिन उनमें से कोई भी सवाल या जवाब हमारे आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं दे पा रहा है। Because all things but Krishna give only temporary satisfaction only. क्योंकि कोई भी अन्य चीज कृष्ण के अलावा सवाल जवाब हमें बस अस्थायी संतुष्टि दे सकती है। So if we have to have complete satisfaction, we must take to the questions and the answers about Krishna. अगर हमें पूर्ण संतुष्टि चाहिए तो हमें सवाल और जवाब कृष्ण से संबंधित करने चाहिए। So we cannot do away with questions and answers. तो हम सवाल और जवाब से बच नहीं सकते। It just should be directed about Krishna, getting Krishna. इसको बस कृष्ण की तरफ मोड़ना चाहिए, कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। Then the soul will be satisfied. तब आत्मा संतुष्ट हो सकता है। Otherwise, everything else is temporary, so there'll always be some dissatisfaction, disappointment there. वरना सब कुछ अस्थायी है, इसलिए हमेशा कभी न कभी हमेशा असंतुष्टि रहेगी। So we cannot live, Prabhupada says, for a moment without being questioned or without giving answers.
तो प्रभुपाद कहते हैं हम एक क्षण भी सवालों के या जवाब दिए बिना नहीं गुजारते हैं। Today, right, when you go, you just see everything that's happening is someone's asking you a question, and you're giving them an answer. यहाँ तक कि आज भी आप देखेंगे दिन भर में आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें या तो आपको कोई सवाल पूछ रहा है Or या you're, आप ask, उसके सवाल or का you're जवाब दे asking रहे हैं, them a question, या फिर आप उनको कोई सवाल पूछ रहे and then हैं you're looking for an answer. और आप किसी जवाब की Practically तलाश में हैं। every interaction with every living entity is a question and an answer. That's all we're doing. व्यवहारिक रूप से कोई भी बातचीत जो है सवाल और जवाब पे है। हर एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा के साथ हमेशा ये कर रहा है। Think about it. सोचिए इसके बारे में। Just little study what happens in every interaction today. Someone's asking you a question and you're giving them an answer, or you're asking them a question and you're seeking an answer. That's all that's going on. तो आप ये दिन भर में अपने स्वयं भी आकलन कर सकते हैं। आप जब किसी से मिलते हैं बातचीत के दौरान आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं और आप उनसे कोई जवाब चाहते हैं, या फिर वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं और आप उनको कोई जवाब दे रहे हैं। दिन भर में इसी तरह हमारी बातचीत होती है। If the questions and answers are related to Krishna and how to serve Krishna and how to please Krishna, because Krishna is in the center, then those questions and answers are very important and worthy and will satisfy Krishna and will satisfy the self. अगर हम ये सारे सवाल जवाब कृष्ण से संबंधित, कृष्ण को कैसे शरणागत करना है, कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है, क्योंकि कृष्ण हमारे सवाल और जवाबों के केंद्र बिंदु हैं, तो इससे हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा। And everything else is Maya, it's all temporary. और जो भी इसके अलावा अन्य चीजें हैं वो So माया है और अस्थायी all हैं। of those questions and answers based on Maya, which is very temporary, is not satisfying to Krishna, neither is it satisfying to the soul. तो ये जो भी सवाल जवाब जो माया से संबंधित हैं, ना तो ये हमारे संतुष्टि देता है, ना कृष्ण को प्रसन्न करता है। Our happiness is dependent on Krishna's happiness. हमारी खुशी निर्भर करती है कृष्ण की खुशी पर। This thing we've not fully understood this point. इस बात को हम अच्छे तरीके से समझ नहीं रहे हैं। We're thinking we can make ourselves happy, हम सोचते हैं हम खुद को खुश कर सकते हैं, but without making Krishna happy, we cannot become happy. लेकिन कृष्ण को खुश किए बिना हम खुश नहीं हो सकते, Because we'll have uncontrolled mind and senses, thinking and doing all wrong, sinful things, and getting sinful reaction and punishment. How you can be happy? क्योंकि हमारा अनियंत्रित मन और इंद्रिय हम सारे पाप कर्म में लगेंगे, पाप कर्म का हमें फल मिलेगा, हम कैसे सुखी और शांत हो सकते हैं? So Prabhupada says we can derive the highest satisfaction only by reading and hearing this transcendental literature regarding Krishna. तो प्रभुपाद बताते हैं हमें पूर्ण संतुष्टि मिल सकती है अगर हम पढ़ें और श्रवण करें इस तरह के दिव्य शास्त्रों को। So one should learn the Śrīmad-Bhāgavatam and make an all-around solution to all of the problems. तो किसी को श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए और सारे समस्याओं का समाधान करना चाहिए इसके माध्यम से। And the questions और सवाल pertaining to social, political, सामाजिक, राजनीतिक सवाल or religious matters. या धार्मिक विषय। So Śrīmad-Bhāgavatam and Krishna are the sum total of all things. तो श्रीमद् भागवतम और कृष्णा सभी चीजों के एक जोड़ है। Om Jnana-timiranda Shalakaya Shalakaya Choksanvritam Tasmai Shri Gurave Namaha. O sages, I have been justly questioned by you. हे ऋषियों, मुझे आपके द्वारा कुछ बहुत सारे सवाल पूछे गए। Your questions are most worthy because they relate to Lord Kṛṣṇa. आपके सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित हैं And so are of relevance to the whole world's welfare. और ये संबंधित हैं पूरे विश्व के मंगल से। Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. सिर्फ इस तरह के सवाल ही स्वयं को पूर्ण संतुष्टि दे सकते हैं। So the basic concept that why are we asking so many questions and why we're seeking so many answers? तो मूलभूत विषय है ये है कि हम इतने सारे सवाल क्यों पूछते हैं और हम इतने सारे जवाब क्यों चाहते हैं? Because we want happiness and we want to figure out how to get rid of suffering. क्योंकि हम खुशी चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं हम दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। So how do we do everything right to pass the exam, to get the job, to get the money, to do the job properly? It requires so many questions and answers, right? तो कैसे हम सही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पैसे पा सकते हैं? तो इस तरह से हम उसके पीछे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे हमें जवाब चाहिए होते हैं। So everyone, spiritually or materially, they're asking questions and answers to try to find happiness and get rid of their suffering. तो
तो सभी कोई भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं ताकि उनको जवाब मिल सके और उससे वो अपने दुखों से मुक्त हो सके, खुश हो सके। So now the question is, are the questions and answers based on the soul, based on Krishna, or the questions and answers are based on material bodily platform? तो अब सवाल ये है कि ये सारे सवाल आत्मा और कृष्ण से संबंधित हैं, ये हमारे शरीर से संबंधित हैं, Related to Maya. माया से संबंधित। So are we inquisitive to learn how to enjoy sinful materialistic life? Is that our goal? तो हमारा लक्ष्य, हमारा जिज्ञासा क्या है, कैसे हम भौतिक और पापमय जीवन जी सकें? So whatever our ultimate goal is, whether material or spiritual, we're asking so many questions and seeking answers so that we can reach our goal. तो हमारा जो भी लक्ष्य है, भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसके पीछे हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे जवाब चाहते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। And the birds waking up in the morning say, okay, where do we find food? और पक्षी जब सुबह उठती है वो सवाल करती है कैसे कहाँ मुझे अपना खाना मिलेगा? Mummy, I'm hungry. Are you going to feed me today? The bird's asking, isn't it? तो पक्षी सवाल पूछती है, मम्मी मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे खाना देंगी आज? The mother has to, yes, I'm trying to figure out how to get you some food, you know. और पक्षी की माँ कहती है, हाँ मैं पता लगाने का प्रयास करूँगा आज तुमको खाना कैसे खिलाऊंगी। Right. It's in bird language. ये पक्षियों की भाषा है। Do you know bird language? आपको पता है पक्षियों की भाषा क्या है? Krishna knows. कृष्णा को पता He है। knows what they're looking for. कृष्णा को पता है वो क्या ढूंढ रहे Right? हैं। So everybody's asking questions and looking for answers. तो सभी कोई सवाल पूछ रहे हैं और अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। But because it's not related to Krishna, और therefore Krishna is not satisfied. और क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है ये सवाल, इसलिए कृष्ण संतुष्ट नहीं है। Krishna has created us to have an eternal loving relationship with Him. That's the purpose of our creation. कृष्ण ने हमारा निर्माण किया है ताकि पूर्ण नित्य संबंध हमारे साथ स्थापित कर सके, ये हमारे निर्माण का उद्देश्य है। Every soul is meant for only that purpose. हर एक जीवात्मा इसी उद्देश्य के लिए बनाया How है। to serve Krishna and have an eternal loving relationship with Krishna. That's the only purpose of our soul's creation. हमारी आत्मा के निर्माण का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कैसे कृष्ण की सेवा करना, कैसे कृष्ण के साथ नित्य संबंध स्थापित करना। And we're given the human form of life to come to understand about self-realization, to understand about the soul, the supreme soul, and our eternal loving relationship. तो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, हम अपनी आत्मा परमात्मा को जानकर हमारे नित्य संबंध कृष्ण के साथ उसको जान सकें। So that's the purpose of the human form of life. ये उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का। Is how to become spiritually advanced and to realize this transcendental knowledge that we have an eternal loving relationship with Krishna, and we understand how to engage in that relationship. ये मनुष्य जीवन में हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करें, कैसे हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, समझ पाएं हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है और उस संबंध में किस रूप से हम कार्य कर सकें कृष्ण। So that is Sanatan Dharma. ये है सनातन धर्म। Bhakti means Sanatan Dharma. भक्ति का मतलब है सनातन धर्म। The other Dharma, so-called Dharma, is Kaitava Dharma because it's based on sinful activity and material sense gratification. और दूसरा धर्म जो है कैतव धर्म है, पाप का धर्म है क्योंकि वो पाप कर्म पे आधारित है। So it says, that Krishna says, if you want to come to me in a mood of loving devotion, I'll give you intelligence and understanding how to do it. तो कृष्ण कहते हैं अगर आप प्रेम और भक्ति से मेरी तरफ आना चाहते हैं तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं। And if you try to approach me without this mood of loving devotion, I'll hide myself from you. अगर आप मुझ तक आना चाहते हैं बिना इस प्रेम और भक्ति भाव से, मैं अपने आप को छुपा लूंगा आपसे। So that means the reservoir of all pleasure will keep himself from you because we're desiring something else. इसका मतलब जो सारे आनंद के स्रोत हैं वो हमसे अपने आप को छुपा लेंगे क्योंकि हम उनके अलावा कुछ और चाहते हैं। So it's explained in many places that the only thing that's very most interested and the most attractive thing to Krishna is pure devotional service, Shuddha Bhakti, Prem Bhakti. तो एक ही मात्र चीज जो बताई गई है जो कृष्ण को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। And he's not so impressed with everything short of that. और वो इसके अलावा किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। So therefore only Premi Bhakta, Shuddha Bhakta, real Vaishnava, only they can be peaceful and happy. इसलिए जो शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त वही सिर्फ शांत और सुखी हो सकते हैं। Because Krishna is most peaceful and happy with them. क्योंकि कृष्ण उनसे सबसे ज़्यादा संतुष्ट और सुखी हैं। And he gives himself to them. और वो स्वयं को उनको दे देते हैं। Everyone else is just hankering for some gross or subtle material sense gratification.
और सभी कोई बस उत्कंठा कर रहे हैं किसी तरह से स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से किसी तरह का भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकें। We're still selfish. हम अभी भी मतलबी हैं। We're still in this mentality of I, me, and mine. हम अभी इस मानसिकता में हैं, मैं, मेरा। So I, me, and mine, selfish mentality, no one can be peaceful and happy with this thing. तो मैं, मेरा, हमारा इस तरह की मानसिकता में कोई भी संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकता। And especially Krishna is not happy with that. और विशेष करके कृष्णा उससे खुश नहीं हो सकते। So how will our soul be satisfied if Krishna is not satisfied with us? तो हमारी आत्मा कैसे संतुष्ट हो सकती है अगर कृष्णा हमसे संतुष्ट नहीं है? So if we're inquiring how to satisfy Krishna and understand Krishna and go to Krishna and get out of Maya and give up sinful activities and develop love for Krishna, these questions about how to do that, that's very pleasing to Krishna. तो अगर हम ये सवाल कर रहे हैं, ये जिज्ञासा कर रहे हैं, कैसे हम कृष्ण को जान सकते हैं, कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे उनको शरणागत कर सकते हैं, कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, माया से कैसे बाहर आ सकते हैं, पाप कर्म कैसे छोड़ सकते हैं, तो इन सारे चीज़ों को समझना कैसे कर पाऊंगा, ये कृष्ण को प्रसन्न करेगा, ये हमें संतुष्ट करेगा। So our souls are only meant for that purpose. तो हमारी आत्मा इसी चीज़ के लिए बनाई गई है। So it's either Krishna or Maya. या तो कृष्णा या माया। One is remembering Krishna, the other one is forgetting Krishna. एक तरफ कृष्ण को स्मरण करना, दूसरी तरफ कृष्ण को भूलना। So we're trying to, Prabhupada said, you're trying to enjoy, you're asking questions and answers so that you can enjoy, but you're trying to ignore and forget about Krishna. Forget about your eternal loving relationship with Krishna. तो प्रभुपाद बताते हैं आप आनंद भोगना चाहते हैं सवाल जवाब के माध्यम से, लेकिन आप ये सब कुछ कर रहे हैं कृष्ण को नकार के, कृष्ण से अलग होकर, इसीलिए आप सुखी संतुष्ट नहीं हैं। So it says anything that we do that's not for Krishna's pleasure is more or less sinful activity. तो ऐसा कहते हैं जो भी कार्य हम कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हो, कम या ज़्यादा पाप करना है। It's still selfish, sinful activity. मतलबीपन है, पाप करना है। So that's not pleasing to Krishna, so how will our soul be pleased? तो उससे अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो पाएगी? So we are eternally hearing. तो हम नित्य रूप से It's the nature of the soul. ये आत्मा का स्वभाव है। So if we're not hearing from Krishna and talking about Krishna, then we'll be hearing and talking about Maya. तो अगर हम कृष्ण के बारे में नहीं सुन रहे हैं तो हम माया के बारे में सुन रहे हैं। It's some other type of, manifestation. कुछ अन्य तरह का प्राकट्य रूप हम सुन रहे हैं। Everyone has to surrender and serve. हर किसी को शरणागत करना है और सेवा करना है। It's either Krishna or it's Maya. या तो वो कृष्ण को करेंगे या माया को। So are we surrendering and serving Krishna, or are we surrendering and serving Maya's family? तो हम कृष्ण को शरणागत कर रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, या माया के परिवार को सेवा शरणागत कर रहे हैं। So all of the questions and answers have to be determined based on what is our goal. तो सारे सवाल जवाब इस बात पे आधारित है कि हमारा लक्ष्य क्या है। Prabhupada said if we are to have complete satisfaction, we must take to questions and answers about Krishna. प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हमें पूर्ण संतुष्टि चाहिए आत्मा की तो हमारे सवाल जवाब कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। So we're never going to stop asking questions. तो हम कभी सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। We're always going to be seeking answers. हम हमेशा कुछ ना कुछ जवाब ढूंढते हैं। It's just, is it spiritual and eternal topic, or is it temporary and material topic? सवाल ये है कि ये भौतिक या अस्थायी सवाल है हमारे, या आध्यात्मिक और नित्य सवाल है। And if it's based on Krishna and Krishna is happy and satisfied with us, then we'll be peaceful, happy and satisfied. तो अगर ये सवाल कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण उससे संतुष्ट है, कृष्ण उससे प्रसन्न है, तो हम भी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। So our peace and happiness is completely dependent on whether Krishna is peaceful and happy with us. तो हमारी शांति, हमारी संतुष्टि, हमारी खुशी निर्भर करती है कि कृष्ण हमसे संतुष्ट है, हमसे प्रसन्न है या नहीं। Well, I'm just trying to become peaceful and I'm trying to become happy. और मैं बस शांति प्राप्त करने का, खुशी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। How is it possible? कैसे संभव? Without surrendering to Krishna genuinely, it's not possible. कृष्ण को सही तरीके से शरणागत किए बिना ये संभव नहीं है। But we just think, no, if I just make some adjustment,
और लेकिन हम कहते नहीं हम थोड़ा सा कुछ व्यवस्था If कर I लेंगे। move to another place or buy another new house or get a different job, right? अगर मैं किसी अन्य जगह चले जाऊँ, नया घर खरीद लूँ, दूसरी नौकरी कर लूँ, Get a new car, नया गाड़ी खरीद लूँ, you know, Mataji, you know, if I buy some new furniture, you know, माता जी सोचती हैं अगर कोई नया फर्नीचर खरीद लें, new curtains. नए पर्दे खरीदे घर के लिए। My mother, every year, she would paint the whole house like some different color, you know. मेरी माँ जो है घर को हर साल कुछ न कुछ नया रंग डालती थी घर पे। So this is like, because you want some kind of peace and happiness, right? So you're making some adjustments, right? क्योंकि आप किसी तरह का सुख शांति चाहते हैं जीवन में, तो आप कुछ न कुछ अलग अलग चीज़ें एडजस्टमेंट करते रहते हैं। Then they meet some lady or man, you know, and they just said, oh, this is God's arrangement, right? तो हमें And sometimes in beginning they say like that. किसी को कोई स्त्री चाहिए होती है, किसी को कोई पुरुष चाहिए होता है, फिर जब मिलते हैं वो कहते हैं ओ ये तो पूरा भगवान की व्यवस्था से हम मिले हैं, और शुरुआत में कम से कम इतना कहते हैं। It's a match made in heaven, they say. वो कहते हैं स्वर्ग में बनी जोड़ी है हमारी। Yes, this person is my soul mate. ये मेरी आत्मा का उसके साथ संबंध है, आत्मा मेरा जुड़ा हुआ है इस व्यक्ति के साथ। And I always ask the question, how long does the honeymoon last? और मैं अक्सर सबसे सवाल पूछता हूँ, ये हनीमून कितने दिन तक चलता है आपका? Oh, Krishna. So Prabhupada said, there's no love here in this material world. प्रभुपाद बताते हैं इस भौतिक जगत में कोई प्रेम नहीं है। Right? As soon as the woman becomes older and she's not so beautiful, right? Then the man's like, oh, I don't love her so much now. जैसे ही स्त्री थोड़ी बूढ़ी हो जाती है और दिखने में उतनी सुंदर नहीं लगती है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता नहीं अब मैं इससे प्रेम करता हूँ या नहीं। Especially after she has some children. विशेष करके जब उनके बच्चे हो जाते हैं, Maybe puts on some weight, you know. थोड़ा वजन बढ़ जाता है, Right? So the husband's like, you know, I don't know if I love her anymore. तो पति सोचता है कि मुझे पता नहीं मैं उससे उतना प्रेम करता हूँ या नहीं। What happened to the love? प्रेम का क्या हो गया? Right? And then it says, and then if the husband, you know, if he cannot bring home some paisa, you know, if he cannot bring home some nice, create some nice materialistic life for the lady and have many children and bring money and have all of the facility there, right? They're like, this guy's useless, you know. I don't love him anymore, you know. तो जैसे ही पति जब है वो पैसा घर पे लाता नहीं है, भौतिक सुख संपत्ति घर में नहीं लाता है, बहुत सारे बच्चे घर में नहीं लाते हैं, तो सोचते हैं कि ये पति पूरा बेकार है, इसका कोई काम नहीं है। Now this sounds very pessimistic, सुनने में बहुत नकारात्मक लगता है ये, but it's really true, लेकिन ये सच्चाई है। right? That's why the divorce rate is like so crazy high, isn't it? इसलिए तलाक का जो रेट है, दर है, बहुत तेजी से बढ़ They रहा say, है। I thought you guys loved each other. Like, what happened? मैं सोचता था कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अब And क्या हो so, गया प्रेम you का? know, we fell out of love. हम प्रेम में गिर गए। No, you fell out of lust. The lust was not up to the standards. So then you're calling it love, and so we don't love each other anymore. You know. क्योंकि अब आपका काम जो है संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको आप कह रहे हैं अब आप उससे प्रेम नहीं करते हैं। And ladies, you know, they're always insecure, you know, because they know I'm getting older. What if the husband not attracted to me? Then he'll leave me. तो What if he leaves me? Goes for a younger woman. अक्सर जो है जो जवान स्त्रियां होती हैं वो अक्सर ये सोचती हैं कि अगर मैं धीरे धीरे जब बूढ़ी हो जाऊं तो उनको असुरक्षा महसूस होती है, क्या होगा मेरा पति अगर मुझे छोड़ के चला जाए। That's why this makeup is like $1 trillion business, isn't it? इसीलिए जो मेकअप का जो व्यापार है ये करोड़ों का व्यापार बन चुका है। Yes, it's made in France, you know. Is it, do you see my wrinkles? Do I have wrinkles? Are they going away? क्या आप मेरी झुर्रियाँ देख पा रहे हैं? कुछ झुर्री आ रही है क्या मेरी? Yeah, get a facelift, right? Pull it all back, you know. तो ऐसे चेहरा को खींच के थोड़ा चेहरा टाइट करवाना चाहती है माता, Right? Or they shoot the Botox, right? So then they're like, या फिर अपने भौरे भौरे बनवाते हैं they can't smile, they can't frown, you know. वो हंस भी नहीं पाती है ठीक से, वो It's just चेहरा like टाइट, stuck, you know. उनका चेहरा भटक जाता है इतना। And it's like, honey, you know, if you're going for the Botox, can you just have them make it look like smile, you know, just like smile. कहते हैं अगर आप अपना चेहरा टाइट करवाने जा रही हैं तो थोड़ा अपने जो स्माइल को थोड़ा बना लीजिएगा ताकि देखने में खुश लगो।
And she comes home, she looks like she's smiling, but inside she's miserable, you know. और बाहर आती है, देखने में लगता है वो खुश है मेकअप की वजह से, लेकिन अंदर में पूरी तरह दुखी है. And the husband is so callous, he's like, at least she's happy now, you know. और पति का बुद्धि इतना जड़ होता है, सोचता है कम से कम खुश दिख रही हो. You don't love me anymore. और तुम मुझसे अब प्रेम नहीं करते हो. Big drama, big drama. बड़ा बड़ा नाटक होता है. So they're so fearful. तो वो इतने डरते हैं सब. Isn't it? है कि नहीं? I remember I used to, as a young boy, I would see my mother putting on makeup, and it was, to me, it was like so sad, you know, as she was getting older, and she's putting on, making so much effort to try to look young and beautiful, you know. It's very painful watching this thing. To me, I don't know. तो जब मैं जवान था, मैं बड़ा हो रहा था, मैंने देखा जब मेरी माँ जब वो जैसे धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, सुंदरता उनको होती जा रही है, तो कैसे वो कितना ज़्यादा मेकअप लगाती हैं ताकि वो खुद को जवान दिख सके. मुझे देख के बहुत दर्द होता था ये देख के. There's so much fear, so much anxiety, कितना भय है, कितनी चिंता so है, much uncertainty. कितनी अनिश्चितता है उनके जीवन में. And then the husband's running, trying to please the wife, you know, endlessly running, you know. और पति बस दौड़ भाग लगाता रहता है दिन भर, असीमित रूप से कैसे मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सकता हूँ, सुखी कर सकता हूँ. My Gurudev used to say many times, it's easier to please Krishna than it is your wife. मेरे गुरुदेव कई बार कहा करते हैं, कृष्णा को सुखी करना ज़्यादा आसान है अपनी पत्नी को सुखी करने से. You can please Krishna, आप कृष्णा को खुश कर सकते हैं, but you can never please the wife. लेकिन आप पत्नी को कभी खुश नहीं कर पाएंगे. Don't be upset with me. What I heard, I'm just repeating that. Don't get mad at me, you know. मुझसे नाराज मत होइए, मैं वही बता रहा हूँ जब मैंने सुना था, मेरे ऊपर भी रोष मत डालिए. I was also grihastha before. मैं भी गृहस्थ था पहले, गृहस्थ. I used to walk around and I used to say, Ananda. मैं ऐसे घूमता था, मैं ऐसे बोलता था आनंद. Yeah, I'd say bliss. This is bliss, Ananda. मैं कहता था आनंद है पूरा, इसमें आनंद है. And the former wife used to say, why do you have to be so pessimistic? और मेरी पूर्व पत्नी हमेशा कहा करती थी, तो इतने नकारात्मक क्यों सोचते हो हमेशा? And I said, no, I'm just being honest. हम कहते हैं नहीं, बस मैं ईमानदार हूँ. They don't like this. तो उनको ये पसंद नहीं आता. Right? So everyone somehow chasing, running, trying to please them, isn't it? सभी लोग बस प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कैसे प्रसन्न किया जा सकता है. And then the children, if you're not giving them endless new iPhone and money and this and that, they're like, why do I need these people? और अगर बच्चे हैं, उनको आप नया कुछ तकनीकी चीज़, नया आईफोन, नई चीज़ें नहीं देंगे, तो वो कहेंगे कि ये मेरे किसी काम के नहीं है. The father's like, didn't I just buy you one last year for $1,000 or something? Right? और पिता कहते हैं पिछले साल तो मैंने $1,000 का एक खरीद कर दिया है. Yeah, but the new one just came out. और कहते हैं लेकिन नया आ गया है. The selfies are more clear. उसमें सेल्फी और ज़्यादा साफ उठता है. What is this? ये सब क्या है? Everyone's just taking pictures of themselves. सभी कोई अपना खुद का ही तस्वीर खींचने में लगे. This is insane. ये सब फालतू समय है. You love yourself that much? इतना ज़्यादा प्रेम करते हो अपने आप से. So it's a selfish, generation, let's say. Everybody is selfish. तो ये मतलबी युग आ गया है, मतलबी स्वार्थ आ गया है लोगों में. Material life means selfishness. भौतिक जीवन मतलब मतलबीपन. Selfish or extended selfishness. मतलबीपन या विस्तृत मतलबीपन. And as soon as you don't fulfill their selfishness, they have no need for you. और जैसे ही आप उनके मतलब को पूरा नहीं करेंगे, आप उनके लिए कुछ So there's काम no करेंगे. real love in the material world. इसलिए भौतिक जगत में That's कोई why प्रेम nobody नहीं. really satisfied. इसलिए कोई असल में संतुष्ट नहीं. Before in India, there was no divorce in India. भारत में पहले कोई तलाक नहीं होते थे. Right? Now it's thriving business. लेकिन अभी बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है. In America, they have one chapel, Las Vegas. You heard of Las Vegas? अमेरिका में एक जगह है लास वेगस. It says whatever happens in Las Vegas, whatever happens there stays there, ऐसा कहावत है कि लास वेगस में जो होता है वो वहीं होता है, वहीं तक रहता है, बाहर नहीं आता. That means a lot of nonsense going on there, isn't it? Whatever happened there, let it stay there, यानी कि इसका मतलब वहाँ बहुत बकवास चीजें होती है. जो भी वहाँ हो रहा है उसको वहीं रहने दो, बाहर मत आने दो. So they have drive-through marriage place.
तो वहाँ पे चलता फिरता शादी होता है। You don't even have to get out of your car, you know. आपको अपने गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलना है, कार से। You meet the lady or the guy and you say, oh, we love each other, let's get married. Okay, and then you drive up and say, oh, we want to get married, you know. तो वहाँ पे ऐसा होता है कि कोई आप स्त्री या कोई पुरुष महिला एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है चलो शादी करते हैं। फिर आगे जाते हैं रास्ते में, गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलते, वहाँ पे स्टैंप होता है, स्टैंप मरवा लेते हैं रास्ते में। And then someone says, well, we wanted like religious marriage, you know. वो कहते हैं हमें इसे धर्म के आधार पे शादी Person said, no problem. He puts on like some like religious uniform and then he just says some prayer. Okay, that's your religious marriage, you know. और वहाँ पे वो लोग कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस धार्मिक कपड़े पहन लेते हैं और कुछ न कुछ ऐसे पुजारी ऐसे मंत्र कर देते हैं, कहते हैं ठीक है अब तुम्हारी शादी होगी आप लोगों की। I'll be right back. He gets some turban, or, you know. Okay, now it's religious marriage, you know. यहाँ पे कुछ पगड़ी पहन लिया, पोशाक पहन लिया, तो कहते हैं हाँ ये धार्मिक विवाह। And then after a while, if you want to get divorced, you drive on the other side of the window and you just get divorced there, you know. और अगर आप तलाक चाहते हैं, आप वापस रिटर्न घूम कर आइए, उसी खिड़की से आपको दोबारा तलाक भी मिल जाएगा। We found out that we don't really like each other, you know. फिर वो वापस आके कहते हैं हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरे से उतना प्रेम नहीं करते, अब हम तलाक लेना चाहते हैं। Just like this. ऐसा चल रहा है वहाँ। This is advancement of modern civilization. ये आधुनिक सभ्यता का विकास है। Going on in the name of love. प्रेम के नाम पे ये सब चल रहा है। Brother Bob, did you ever go through all that before? बाब आप इन सब चीजों से गुजरे हैं? Ananda, bliss, right? आनंद मिला? It's all bliss. सब आनंद है वहाँ? No? नहीं? Enjoy. आनंद लीजिए, मजा लीजिए। Any questions on anything? कोई सवाल है किसी का? Yes? Hare Krishna. Hare Krishna. So, there was a few times when I was like completely distressed and helpless condition, and I didn't even know that what is ISKCON or Hare Krishna movement, anything. But I had the Prabhupada book, Bhagavad-gita, and then there is a chanting of Hare Krishna Mahamantra. So when I was at that kind of the situation, like maybe this is my life, last day or last night I'll be dead, and I was just chanting, crying, and within a second or less than a second, somehow Krishna saved me. And it happens not once, twice, thrice, but multiple times. So I can like, yeah, it's like faith is like increasing, but I'm thinking like, why only in my difficult situation I always cry and beg and like, Krishna, please save me, or please somehow like, I want to serve you. Why not all the time? Why not each and every second I can remember Krishna? What is happening with me? That's why Queen Kunti said, please let the difficulties, calamities happen again and again. Sometimes I feel that if I'll be in difficult situation, that would be much better for me because I can remember Krishna. That's why Queen Kunti says. इसीलिए कुंती महारानी तो कहा है, तो माता जी का सवाल है कि मैं अपने जीवन में एक बार बहुत दुख और कष्ट में वाली स्थिति में थी और मेरे पास मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, मुझे और कोई मदद का रास्ता नहीं दिख रहा था तभी लेकिन मैं ISKCON के बारे में, हरे कृष्णा मूवमेंट के बारे में मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मेरे पास श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता थी और भगवद गीता के अंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का तरीका बताया था। तो मैंने बस पूरी अपनी मदद की गुहार लगा, हरे कृष्ण महामंत्र मैंने जप किया और कुछ क्षणों में ही मुझे मदद मिली। कृष्ण ने मेरी किसी तरह रक्षा की और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार हुआ। तो मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, क्यों मैं हमेशा इस तरह कृष्ण को अपनी मदद का गुहार नहीं लगाती, क्यों मैं हमेशा कृष्ण के प्रति शरणागति होने का, सेवा करने का, उनसे प्रेम विकसित करने का मेरा हमेशा भाव ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों मैं सिर्फ दुखों और कष्टों में सिर्फ कृष्ण को याद करना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, इसलिए तो कुंती महारानी कहती हैं कि हमें हमेशा हमारे जीवन में विपदा आनी चाहिए, तब हम कृष्ण को याद रख पाएंगे। Did I understand her properly? क्या मैं इनको सही तरीके से समझ पाया? I gave like sutra. मैंने इनको एक I सूत्र just दिया, condensed it into the essence. मैंने इसको एक सार के रूप में उनको दिया। Right? If we have pure loving devotion for Krishna, it's automatic. अगर हमारे पास शुद्ध प्रेम है कृष्ण के प्रति तो ये स्वाभाविक होगा। But because we've not come to this platform, therefore we need to be, in some way forced, pushed, encouraged. क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, इसलिए कई बार हमको मजबूर करना पड़ता है, हम पे दबाव डालना पड़ता है, हमें धक्का लगाना पड़ता है। Because we're stubborn, क्योंकि हम जिद्दी, we're not so
experienced. हम उतने अनुभवी नहीं हैं, Our bhakti, devotion and faith is not so strong. हमारा भक्ति उतना मजबूत नहीं है, Maya doubts are always attacking. माया संदेह हमेशा हम पे हमला करती रहती है, So we need help. तो हमें मदद की ज़रूरत है। That's why if we do sadhu sangha, satsanga and hear this discussion, then we remember. तो इसलिए हम साधु संग सत्संग करेंगे तो हम हमेशा याद रख सकते हैं, Oh, I'm servant of Krishna. I should serve Krishna. I should do sanatan dharma. मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, साधु संग करनी We should try to please Krishna instead of just trying to be selfish. Try to please ourselves or our family and friends. हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, स्वयं के प्रति मतलबी होने के बजाय स्वयं को संतुष्टि, स्वयं के परिवार को संतुष्टि करने के बजाय। So by satsanga, sadhu sangha, hearing and chanting, then it will purify us and remind us of what is the ultimate spiritual reality and the best thing that we can do for ourselves and for other people. तो जब हम इस तरह साधु संग सत्संग करेंगे तो हमें याद दिलाएगा, हमें शुद्ध बनाएगा, कैसे हम स्वयं के लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो कर सकें और अन्य लोगों के लिए भी जो श्रेष्ठ कर हो उसको कर सकें। So by asking questions and getting answers related to Krishna, this will purify us and remind us and hopefully inspire us. तो अगर हम सवाल पूछे कृष्ण से संबंधित हों, वो हमें उम्मीद है वो हमें शुद्ध करेगा और हमें स्मरण दिलाएगा इस कृष्ण के बारे में। Because it's related to Krishna, how to become Krishna conscious. क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है और कैसे कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं, How to please Krishna, कैसे कृष्ण how to को get प्रसन्न out कर of सकते हैं, Maya, कैसे माया से बाहर आ सकते हैं, how to develop spiritual desire. कैसे आध्यात्मिक इच्छा प्राप्त कर सकते हैं। That should manifest if we're hearing and chanting properly in right association. ये प्रकट होना चाहिए अगर हम सही संग में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, That's the best way ये श्रेष्ठ तरीका है to remember. याद स्मरण करने का। And then when we forget, then Krishna says, okay, I'll fulfill your desire. One place it says, Krishna says, I'll fulfill your desire, but I'll do it in such a way that you'll never ask for it again from me. तो अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं अगर आप वो इच्छा करेंगे तो मैं आपको इस तरीके से उस इच्छा की पूरा करूंगा कि आप दोबारा कभी उस इच्छा की मांग नहीं करेंगे। Krishna says, why should I fulfill your desire where you just forget about me? कृष्ण कहते हैं मैं आपकी कोई इच्छा क्यों पूरा करूं जिससे आप मुझे पूरी तरह भूल जाएं। You said you want to surrender and serve me, so why will I just fulfill your desire that you just completely forget about me? आपने इच्छा की कि मैं आपको पूरी तरह शरणागत करना चाहता हूं, आपको सेवा करना चाहता हूं, तो मैं आपकी कोई इच्छा क्यों पूरा करूंगा जिसके माध्यम से आप मुझे पूरी तरह भूल जाएं। So even his devotees who have desire, Krishna will fulfill your desire. He said, but I'll do it in a way you won't ask for that same thing again after you get it. तो भक्तों की कोई अगर इच्छा होती है तो कृष्ण उसको इस तरीके से पूरा करते हैं कि दोबारा हम उस इच्छा की कभी मांग नहीं करेंगे। Because we'll get a good lesson by it, I think. क्योंकि हमें उससे कुछ अच्छा पाठ सीखने को मिलता है फिर। So that's also Krishna's mercy. तो ये भी कृष्ण की कृपा है। Now we won't be so foolish, तब हम उसके बाद हम उतने मूर्ख so नहीं रहेंगे, whimsical, उतने ज़्यादा गलत make तरीके से bad काम नहीं करेंगे, decisions, गलत फैसले नहीं लेंगे, not depend on Krishna, not depend on Guru Krishna's arrangement. गुरु कृष्ण के व्यवस्था पे निर्भर ना होकर, Then we're listening to Maya's arrangement, और माया के व्यवस्था को जब सुनते हैं and we have to suffer. तो हमें दुख भोगना पड़ेगा, Otherwise, how do we get the lesson? वरना हम पाठ कैसे सीखेंगे। So when people are really fired up and determined and they have a big plan, I listen to it and I just said, oh, this sounds very passionate. तो जब कोई व्यक्ति बहुत जोश में और पूरे दृढ़ निश्चय में आगे कहता है कि मेरे पास कोई योजना है और मैं जब उसको सुनता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे सवाल पूछता हूँ मैं। So then I asked him, is this plan, is the idea, is it coming from Krishna or coming from Maya? तो मैं उनसे पूछता हूँ आपका ये विचार, आपका ये योजना, ये कृष्णा से आ रही है या माया से? Then they get nervous. Oh, I don't know. I didn't think about that. तो फिर वो थोड़े घबराने लगते हैं, सोचते हैं मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कभी। Well, shouldn't you think about that? तो मैं उससे कहता हूँ कि आप उसके बारे में सोचना नहीं One will चाहिए। give you success and other will make you suffer. Shouldn't you think about whether it's coming from Krishna or Maya? एक आपको सफल बनाएगा और दूसरा आपको दुख भोगवाएगा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कृष्णा से आ रहा है या माया से। So then the question is this coming from Krishna or coming from Maya? सवाल अब ये है कि ये कृष्णा से आ रहा है या माया से। I remember one time I was in California and one devotee came to my house and he said, I have a big business, I'm looking for a partner.
तो मुझे याद है एक बार मैं जब कैलिफोर्निया में था, एक भक्त मेरे घर पर आया, उसने मुझसे कहा कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापार करने वाला हूँ और मुझे एक पार्टनर की तलाश है। And I have this truck and I'm driving around America and I'm selling oil paintings and I'm making so much money I cannot handle it by myself. I need to invite someone else to help me. तो उसने कहा मैं पूरे अमेरिका में, मेरे पास एक ट्रक है, मैं उसमें जो है ऑयल पेंटिंग्स हैं उसको मैं घूम घूम कर बेचता हूँ, मैं इतना पैसे कमा रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं मेरे पास कि मैं उसका व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक मित्र चाहिए, पार्टनर चाहिए उसमें मदद करने के लिए। At that time I was distributing Prabhupada's books. और उस समय प्रभुपाद की किताबें बांटता था। So I had very little money and no bank balance, nothing like that. मेरे पास बहुत कम पैसे थे, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। So all of a sudden this devotee who's very successful is coming and saying, I want to, I need a partner, like I need 50-50 partner. तो अचानक से कोई भक्त आया और वो बहुत पैसे कमा रहा था और उसने मुझसे कहा कि हम 50% शेयर करेंगे फ़ायदा, ऐसा उन्होंने मुझे ऑफर दिया। Newly married, had a child. मैं नवविवाहित था और मेरे बच्चे भी थे। So some pressure, some financial pressure coming also. तो कुछ आर्थिक रूप से मेरे ऊपर भी दबाव था। So I was thinking, how much can I expect to make doing this job? तो मैंने सोचा कि इस व्यापार से हम कितना कमा पाएंगे। And he said to me, probably $16,000. What was it? A month. A month. उन्होंने कहा संभावित रूप से $16,000 एक महीने में। How much is $16,000 in rupees? 4,20,000 रुपए भारत के हिसाब से एक महीने में कमाऊंगा। So like 4-5 lakhs, right? Right, every month. So I said, this is unbelievable. This must be, Krishna's arrangement. It seems like it's more than that, is it? 9 lakhs. 9 lakh, yeah. 9 लाख हर महीने कमाऊंगा, ऐसा मुझे ऑफर मिला। मुझे लगा ये अविश्वसनीय है, ये कृष्णा से आ रहा है मुझे। I hope you have an accountant with your business. मुझे उम्मीद है आपके व्यापार में कोई अकाउंटेंट है आपके साथ। So, what is that? 12. And he advanced on 12. He needs an accountant also. He's a brahmachari. He doesn't need an accountant. ये ब्रह्मचारी He's got Sanatan. इसको पता ही नहीं, सनातन को पता होगा। देखते हैं सनातन। 12 lakhs 12 लाख every month. हर महीने। So I was like, wow, this seems like Krishna is really giving me quite an opportunity there, मुझे लगा कृष्णा मुझे कोई बहुत बड़ा मौका दे रहे हैं यहाँ। And I wasn't even asking for it. और मैंने इसको पूछा भी नहीं इसके लिए। So then I started getting really mental about this opportunity. तो फिर मैं पूरा अपने मन में घुस गया इस मौके को जब मैंने सुना। And maybe I was becoming attached to the idea, like, wow, this is fantastic. This is a great opportunity. मुझे लगा इस मौका, मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है। मैं आसक्ति मेरी बढ़ने लगी इस मौके से मेरी। So then I started getting so mental because it was so big discussion. I was so disturbed. I don't know, is this coming from Krishna? Is this coming from Maya? I don't know, what is it, तो मैं इतना ज़्यादा मानसिक मेरे ऊपर दबाव आ गया, मैं समझ नहीं पा रहा था, बहुत परेशान हो गया कि ये असल में कृष्णा से आ रहा है या माया से आ रहा है। I wanted it to come from Krishna. मैं चाहता हूँ ये कृष्णा की तरफ से आए। But I was doubting it. लेकिन मैं उस पर संदेह कर रहा था। So I kept going back and forth. Is this Krishna or is this Maya? Like, I don't know, what is it, तो मैं ऐसे आगे पीछे जाता रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये कृष्णा से आ रहा है या माया से आ रहा है। So then when I was harassed by the mental speculation, I said, I better call Gurudev. I better call my spiritual master. तो मैं अपने मनोधर्म से जब पूरी तरह प्रताड़ित हो गया, तो मैंने सोचा मैं बेहतर होगा मैं गुरुदेव से जाकर पूछूं, मैं गुरुदेव से जाकर बात करूं। So I was in California. तो मैं कैलिफोर्निया में था। And Gurudev was in Bhubaneswar. गुरुदेव भुवनेश्वर में थे। And I called his phone. मैंने उनके फोन में। I was like kind of new devotee, like really new disciple. मैं एक बहुत ही नया शिष्य था। So I said, well, Gurudev will help me to know, is this coming from Krishna or Maya? तो गुरुदेव मेरी मदद करेंगे ये जानने के लिए कृष्णा से आ रहा है या माया से। So then I prayed beforehand. I said, okay, now when you present this to Gurudev, although you're a little attached, try to be neutral. तो मैंने पहले से ये तैयारी की, मैं गुरुदेव से ये बात करने वाला हूँ, यद्यपि मैं इस प्रक्रिया इससे बहुत आसक्त हूँ इस मौके से, लेकिन मुझे जो है न्यूट्रल रहना होगा, कोई वो जो भी कहे मुझे उसको स्वीकार करना होगा।
Try to be detached, try to be neutral, just present it, the scenario, the situation as straightforward as possible. तो जितना सीधे तरीके से जो आपको समझ में आ रहा है उसको गुरुदेव को बताना और उस पर अनासक्त रहना. Then I explained everything to Gurudev. तो मैंने सब कुछ गुरुदेव को This बताया. devotee came, he offered me this position, and Gurudev patiently listened to everything. और ये मैंने गुरुदेव को बताया, ये भक्त मेरे पास आया, उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा है और गुरुदेव ने बहुत शांतिपूर्वक उसको सुना. Then I said, Gurudev, I'm very confused because I don't know, is this coming from Krishna or is it coming from Maya? तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैं बहुत भ्रमित हूँ, भटका हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कृष्णा से आ रहा है या माया से. So I wanted it to be from Krishna, and I was a little attached. तो मैं चाहता था ये कृष्णा से आ रहा, मेरी थोड़ी आसक्ति भी हो गई थी उससे. But I was nervous, I was fearful because what if it's Maya? लेकिन मैं थोड़ा भयभीत था, मैं थोड़ा घबराया हुआ था, अगर क्या होगा अगर ये माया से आ रहा है. So I said, Gurudev, is this coming from Krishna? Is this Krishna's arrangement or is this the Maya's arrangement? मैंने गुरुदेव से पूछा, ये कृष्णा की व्यवस्था है या माया की व्यवस्था है? And he said, no, don't do it. This is Maya, completely Maya. तो मेरे गुरुदेव ने कहा, नहीं, इसको मत करना, ये पूरा माया है. This will put you in big trouble. तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे. So at first I was like disappointed, you know. तो पहले मैं थोड़ा निराश हो गया. Because like I said, I was like a little attached and thinking, oh, this will solve a lot of problems, right? So I was like, oh, okay. But I was happy I got the answer. तो मैं थोड़ा पहले निराश हो गया क्योंकि मैंने पहले कहा था, मेरी थोड़ी आसक्ति थी उससे, मैं सोच रहा था मेरी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इससे, लेकिन मैं अंत में ये खुश हुआ ये जानकर कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया. Because now it's clear. क्योंकि अब ये साफ हो चुका है. So I don't have to just go back and forth 100,000 times. You know? बस आगे पीछे ऐसे हजारों, 100 बार, सैकड़ों बार मुझे आगे पीछे नहीं करना होगा. Then I called that person, that devotee, I said, oh, thank you so much for giving me opportunity, but really it's not a good timing for me. I gave some excuse, to get out of it. तो मैंने उस भक्त को फ़ोन किया और मैंने उसको कहा, बहुत धन्यवाद किया कि आपने मुझे ये मौका दिया है, लेकिन मैंने उससे बचने के लिए कुछ बहाना कर दिया कि हाँ शायद मेरे लिए अभी ये सही समय नहीं है. इस तरह मैं बहाना बनाकर उससे बाहर निकल गया. This is true story. ये सच. Then just after that, I found out that man got arrested by the government. और कुछ समय बाद मुझे पता चला उस व्यक्ति को सरकार ने पकड़ लिया है. Because he was doing some kind of criminal, illegal business. क्योंकि वो किसी तरह का गैर कानूनी व्यापार कर रहा था वो. I don't know what happened to him, but I heard that happened to him. मुझे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता कैसे हुआ ये, लेकिन मुझे पता चला उसके साथ ये हुआ है. And I was so grateful that I was fortunate enough to have a guru who could tell me either way, and Krishna confirmed, because I wasn't accepting also. I was like, something doesn't seem right about it. Who comes and says, here's a business for 12 lakhs every month? So it doesn't, what do they say? It's too good to be true, right? तो जब मैंने गुरुदेव से इसके बारे में पूछा और गुरुदेव ने जब इसका सच्चाई मुझे बताई, तो मैं भी कृष्णा से प्रार्थना कर रहा था. तो कृष्णा ने भी मुझे इस बात की पुष्टि की, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सच लग रहा था, कुछ ज़्यादा ही सच्चाई इसमें लग रही थी, क्योंकि 12 लाख सिर्फ एक महीने में कमा पाना इतनी जल्दी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था, संभव नहीं लग रहा था. Guru Krishna saved me. तो गुरु कृष्णा ने मुझे बचा लिया. So okay, so many plans are there, but is it coming from Krishna or Maya? तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो उसमें से कौन सी कृष्णा से आ रही है, कौन सी माया से? Is it really going to work? Is it really going to be successful? Are you really going to be peaceful and happy? That means it has to come from Krishna. क्या ये असल में काम करेगा? क्या असल में आप सफल हो पाएंगे, शांत और सुखी हो पाएंगे? तो इसको कृष्णा से आना होगा. And everything else is designed to fail. और इसके अलावा कोई भी अन्य चीज जो है असफल होने के लिए बनी है. Now people can say, well, I have good karma, so why do you say it's going to fail? तो कुछ लोग कहते हैं मेरे पास बहुत पुण्य कर्म है, आप कैसे कह सकते हैं मेरे I did many things that were not Krishna conscious. I was successful. मैं अगर कृष्ण भावना में भी नहीं हूँ तो भी मैं सफल हो सकता हूँ. I have maybe some pretty good karma, so it's turning out all right. मेरा कर्म बहुत अच्छा था, इसलिए अब मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा है. And then it's explained that once you surrender to Krishna, to Guru and Krishna, and accept them, your karma is finished. ऐसा कहते हैं जब एक बार आपने गुरु कृष्ण को शरणागत कर दिया तो आपका कर्म खत्म हो जाता है उसी समय. Now you're coming directly under Krishna, not karma. तो अब आप पूरी तरह कृष्ण के अंदर आ जाते हैं, कर्म खत्म हो. So maybe your karma
if you had pretty good karma, maybe you think I can be successful, but now that karma is gone. Now it's up to Krishna to say, is this going to help this person in his spiritual life or not? एक बार आपने जब कृष्ण को गुरु को शरणागत कर दी तो आपका कर्म खत्म हो चुका, तब आपका जो पुण्य कर्म था वो खत्म हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि मैं उससे सफल हो सकता हूँ, तब वो भी आपके पास मौका नहीं है। तब आप कृष्ण आपको बताएंगे कि ये आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। Now it's a new dynamic, new science is available. अलग तरीका, अलग विज्ञान काम करेगा। Any other questions or points? कोई और सवाल? Hare Krishna. Hi, Bo. How can I be fortunate enough to not miss the opportunity and actually be able to hear Krishna and take his helping hand? What is it? How can I be fortunate enough to get Krishna's helping hand and not be unfortunate? Desire to not be unfortunate. तो माता जी का सवाल है कि वो पूछ रहे हैं कैसे मैं जो है दुर्भागी ना होकर कैसे जो कृष्ण मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं उस मदद को मैं ले सकूं। Just pray to Krishna, please, I have such an opportunity to become most fortunate. Please don't let me blow it. Don't let me lose it. कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, मुझे इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला है अपने इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, मुझे इस मौके को छोड़ने मत दीजिए। Please give me strength, intelligence to be able to keep it up. मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं इसको बनाए रख सकूं। Otherwise, instead of being most fortunate, now we'll become the most unfortunate. तो सबसे ज़्यादा सद्भाग्य बनने के बजाय हम सबसे बड़े दुर्भाग्य बन जाएंगे। So that's only fear we should have. यही एकमात्र भय हमारे अंदर होना चाहिए। And then pray to Krishna, Guru, Sadhu, Guru, Vaishnava, please shower your mercy or cause us mercy on me. Don't let me fail in the mission. कृष्णा गुरु से साधु से प्रार्थना कीजिए, उनके सामने रोइए, उनसे कृपा पाने के लिए कि मुझे आपके इस मिशन में असफल होने मत दीजिए। Have to pray. हमें Have to प्रार्थना cry to करनी होगी। Krishna, Guru कृष्ण के Krishna. सामने रोना होगा, गुरु कृष्ण के सामने। Chant holy name. Please Krishna, hear my prayer. Please, I want to be devotee. I don't want to be Maya Das, Maya Dasi. I want to be Krishna Das, Krishna Dasi. कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान पवित्र नाम के सामने रोना है, मैं कृष्ण दास बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, माया दास रहना नहीं चाहता। Yeah. How can I keep up this prayers, like this heartfelt, sincere prayer to Krishna? How can I have this? Follow the instructions of the Guru. माता जी का अगला सवाल ये है कि कैसे मैं अपने ये जो प्रार्थना है इसको निरंतर रख सकती हूँ, ईमानदारी से हमेशा बनाए रख सकती हूँ। Make the instructions life and soul. गुरुदेव ने बताया कि गुरु के निर्देश को अपना जीवन का सार बनाइए। General instruction means chanting Hare Krishna Mahamantra, hearing and chanting about Krishna. That's meant for everybody. सामान्य निर्देश है कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करना, भगवान का नाम के जप कीर्तन करना, ये सभी के लिए एक है। And then specific seva. और कुछ विशेष सेवा होती है। To work at the deities or do the cooking or be a preacher or do business or be a farmer or all the different sevas are there. That's specific seva. और विशेष सेवा होती है जैसे कि आपको विग्रह की सेवा करनी है, आपको रसोई कराना है, या आपको प्रचार करना है, आपको खेती करना है, इस तरह की अन्य विशेष सेवा होती है। So try to follow general and specific service for the pleasure of Guru and Krishna. तो विशेष और सामान्य निर्देश का पालन करने का प्रयास कीजिए गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। And they will help you. They'll strengthen you. They'll give you, remind you. They'll encourage you. और वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको स्मरण दिलाएंगे, वो आपको शक्ति देंगे। But in the beginning, especially hearing and chanting in association with the spiritual master, with Sadhu, Guru, Vaishnava, most important. लेकिन शुरुआत में साधु गुरु वैष्णव आध्यात्मिक गुरु के साथ श्रवण कीर्तन करना सबसे महत्वपूर्ण है। That's vapu means personal association and seva. वपु का मतलब है व्यक्तिगत सेवा। If we don't have enough of that, then how we can just depend on the instructions? अगर हम उतना उसको काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ना करें तो कैसे हम सिर्फ उनके वाणी में निर्भर रहेंगे? There has to be enough personal association. पर्याप्त हमें व्यक्तिगत संग करना पड़ेगा उनके साथ। There must be a relationship. अवश्य एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। Cultivated. उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा।
Then in that cultivate a relationship, you want to try to please that person, you want to keep up that relationship. तो जब अपना संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और संबंध को बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे मैं उनको प्रसन्न कर सकता हूँ. And that's based on loving devotional service. और ये आधारित है प्रेममय सेवा पे. But if there's not a sufficient personal association and hearing and chanting and experiencing that, then how can you just make his instructions your life and your soul? लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में आप उनके साथ व्यक्तिगत संग नहीं करेंगे, श्रवण कीर्तन करके वो पर्याप्त फल अपने जीवन में नहीं देखेंगे, तब तक कैसे आप उनके निर्देश को अपने जीवन का सार बनाएंगे? It's a personal philosophy. ये एक व्यक्तिगत It's not just these instructions. ऐसा नहीं कि कहीं से बस कोई निर्देश है. And it's not attached to like any person. और किसी व्यक्ति से And we're just like following these instructions, you know. कि हमें बस कहीं से कुछ निर्देश मिला है, हम उसका पालन कर रहे हैं. It only works when the instructions are coming from and part of the relationship that we have with our spiritual master, who we got the instructions from. ये निर्देश तभी मायने रखते हैं जब हमें वो मिले हैं उस व्यक्ति से जिनके साथ हमारा संबंध है, हमारे गुरु से, तभी हम उसके पीछे कार्य कर सकते हैं. So that's why in the beginning, when you first meet the spiritual master, the first most important service is to personally associate with him and hear from him. इसलिए जब प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु प्राप्त होते हैं तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेवा है उनके साथ श्रवण कीर्तन करना, उनके संग में, व्यक्तिगत संग में. This is first most important seva. ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सेवा है. And to associate means to hear. और संग करने का मतलब है श्रवण करना. And how to hear? What is the quality of the hearing? कैसे श्रवण करना? श्रवण में क्या योग्यता, गुण क्या होनी चाहिए हमारी? That has to also be understood. How to do it? इसे भी समझने की जरूरत है, कैसे इसको करना है. I remember when I first came to Bhubaneswar, I kept going to Guru. I said I should have more seva. मुझे याद है जब Maybe I should be do some other thing. मैं जब पहली बार भुवनेश्वर आया तो मुझे याद है मैं हर दिन मैं सोचता था कि मेरे पास और भी कुछ सेवा होनी चाहिए, मैं बस आके श्रवण करता हूँ. And every time I was asking Gurudev, like, what seva should I do? और हर बार मैं जाके गुरुदेव से पूछता था मुझे और And क्या सेवा Gurudev करनी है. said, you just come every day and hear Śrīmad-Bhāgavatam and hear Hari-katha Krsna-katha. That's your seva. और गुरुदेव ने कहा तुम प्रतिदिन रोज आओगे, श्रीमद् भागवतम श्रवण करोगे, हरि कथा श्रवण करोगे, ये तुम्हारी सेवा है. And I was watching like many people doing many different type of seva, so I thought maybe I should also do like many different type of seva. तो मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे अलग अलग तरह की सेवा कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा मुझे भी अलग अलग तरह की और भी सेवा करनी चाहिए. And Gurudev said, no, every day as much as possible you hear and chant, you come hear Hari-katha Krsna-katha from me. तो उन्होंने कहा प्रत्येक दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तुम और श्रीमद् भागवतम हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण करो मुझसे. So that's what will purify our consciousness ये हमारी चेतना को शुद्ध करेगा and increase our spiritual desire and हमारी motivation आध्यात्मिक इच्छा को, उद्देश्य को बढ़ाएगा and shrink and minimize the material contamination and material attachment और भौतिक आसक्ति, भौतिक कलमश को कम करेगा, सिकोड़ देगा and make material desires something weak and weakened position. और भौतिक इच्छाएं जो हैं और कमजोर होती जाएंगी. Then we'll try to understand what is Krishna's plan, what is Guru Krishna's mission and plan for us in our life. तो हम समझने का प्रयास करेंगे गुरु कृष्ण का हमारे जीवन के लिए क्या उद्देश्य है. So that association is most important, first of all. तो ये संग सबसे महत्वपूर्ण है. That's like, that will nourish you. ये आपको पोषण देगा. If we don't have that type of nourishment and food for the soul, अगर आपको ऐसा पोषण नहीं मिलेगा और आपके आत्मा को ऐसा भोजन नहीं मिलेगा we don't शुरुआत have में, this type of relationship based on the food for the soul, अगर आप ऐसा संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं अपने आत्मा के भोजन के रूप में, then we're not robots. तो हम कोई रोबोट नहीं है. I'm just following instructions. मैं बस पालन कर रहा हूँ, मुझे जो निर्देश मिले हैं. I got some instructions, I'm following instructions. मुझे कुछ निर्देश मिले हैं, मैं उसका पालन कर रहा हूँ. It's tied to a relationship ये with संबंधित our है spiritual master. जो हमारा संबंध है आध्यात्मिक गुरु के साथ, उसके साथ जुड़ा हुआ है ये. And he's explaining why those instructions are valuable to us और वो हमें बताते and हैं how it कि will help us वो निर्देश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो कैसे हमारी मदद कर पाएंगे. according to our nature, हमारे स्वभाव के आधार पर according to the practicality of our situation, और व्यवहारिक रूप से जो हमारी स्थिति है,
and what will, how do you say, inspire us, give us some engagement. जो हमें कुछ प्रेरणा देगा, हमें कुछ कहीं लगाए रखेगा, is most important. ये सबसे महत्वपूर्ण है। People say, well, no, the instructions are most important. Yeah, but without personal association and faith and a relationship and the benefit of that personal association, then how do you just make the instruction your life and your soul? कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना अगर आपने व्यक्तिगत संग नहीं किया है, वपु सेवा नहीं किया है, और अगर पर्याप्त श्रद्धा विकसित नहीं है उनके अंदर, तो कैसे आप उनके निर्देश को अपने जीवन का सार बनाएंगे? And then once you have that faith and relationship, you make the instructions your life and soul, then any time you sincerely, seriously execute those instructions, you'll feel that my Guru and Krishna and devotees are happy with me, so then I'm peaceful and I'm happy. I feel secure when I'm doing my seva. तो अगर आपने इस तरह से पर्याप्त संबंध विकसित किया है गुरु के साथ और आपने पर्याप्त श्रद्धा प्राप्त की है गुरु के अंदर, जब आप गुरु के निर्देश को आप सही तरीके से पालन करते हैं पूरी ईमानदारी से, एक निष्ठता के साथ, तो आप देख पाएंगे गुरु, कृष्ण और आपके आसपास के भक्त आपसे संतुष्ट हैं, आपसे खुश हैं और उसके फलों से भी संतुष्ट हैं, तो आप भी देख पाएंगे उस निर्देश को पालन करने। The instruction of the spiritual master is non-different from the spiritual master. प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक गुरु के निर्देश आध्यात्मिक गुरु से अभिन्न है। So if I plug in to those instructions and try my best to execute those instructions, then I feel the presence, the shelter and the protection of my spiritual master within those instructions. तो जब मैं उन निर्देशों का पालन करने का पूरी ईमानदारी से श्रेष्ठ देकर प्रयास करता हूँ, तो मुझे जो फल प्राप्त होते हैं मैं देख पाता हूँ, आश्रय और रक्षण मेरे आध्यात्मिक गुरु का मैं मौजूदगी उस निर्देशों के माध्यम से महसूस कर पाता हूँ। But in the beginning, it's personal association and hearing from them and getting purified and develop faith and understanding how to advance. और लेकिन शुरुआत में उनके साथ व्यक्तिगत संग और उनके संग में सही तरीके से श्रवण करना, जिससे आप श्रद्धा विकसित कर सकें, एक संबंध विकसित कर सकें, ताकि आप उनके निर्देशों को सही तरीके से पालन कर सकें। We just had short time together. लेकिन हमारा काफी कम समय एक दूसरे के साथ बीता है। So it's like not enough. तो ये पर्याप्त नहीं है। But still, whatever it was, it's still keeping you here. It's still somehow keeping you trying, isn't it? लेकिन ये जितना भी हुआ, अभी तक आप यहाँ मौजूद हैं और आपको अभी तक प्रयास आप कर रहे हैं, अभी तक आप यहाँ बने हुए हैं उसके वजह से। So it shows you, even if it's a little bit of association, if it's meaningful, it will still be very effective to give you shelter and protection. तो आप देख पा रहे हैं कि आपको बहुत हो सकता है बहुत कम ही समय मिला हो, बहुत ही कम फ़ायदा मिल पाया वो उस संघ का, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वो छोटा सा कम समय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। It's very powerful, very effective. बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। But the Guru knows also that you need food for the soul. You need a petrol, mercy in the tank. गुरु ये भी जानते हैं आपको आत्मा के लिए भोजन चाहिए, आपको अपने टंकी में जो है ईंधन भी भरना है। You cannot just go running on fumes, आपको बस आपके धुएं निकल रहे हैं सब तरफ से, आप उससे भी बाहर निकल रहे हैं। When you're young and you're a student, you don't have a lot of money. आपको You're driving a motorcycle or car, and it's like there's not really petrol there. It's just like a fumes, जब आप जवान होते हैं, जब आप स्टूडेंट जीवन में होते हैं, कई बार आप जब चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं और गाड़ी में तेल ज़्यादा होता नहीं है, मतलब अब धुएं पे बस गाड़ी चल रहा होता है। I'm running on fumes. I don't know if I'll make it home, तो जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं पता नहीं घर तक पहुंच पाऊंगा नहीं, यहाँ पे धुएं निकल रहा है गाड़ी से। Right. So the spiritual master, he knows the person's running on fumes, आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके धुएं निकल रहे हैं अब। So if you don't go and fill up the tank and tell them about Krishna and give them food for their soul and give them some strength and inspiration, how will they make it? तो अगर वो जाकर उनको कृष्णा के बारे में नहीं बताएंगे, उनको कुछ आत्मा के लिए भोजन नहीं देंगे, कुछ शक्ति प्रेरणा नहीं देंगे, तो कैसे वो इस चीज़ को पूरा कर पाएंगे? That's why you're praying, crying for Krishna's mercy, help, and then Krishna is sending spiritual masters, sending nice association to give you food for the soul. इसलिए जब आप कृष्णा को प्रार्थना करते हैं, कृष्णा के सामने रोते हैं, तो कृष्णा आपकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए आपके आध्यात्मिक गुरु और अच्छा संघ आपके पास भेजते हैं, ताकि आप उसके आत्मा का भोजन प्राप्त हो सके। Because Krishna is manifesting and speaking there in that association.
कि कृष्णा वहाँ प्रकट हो रहे हैं और उस संग के माध्यम से प्रकट होकर बात कर रहे हैं। My Gurudev used to explain that bona fide Guru, he can make Krishna appear मेरे गुरुदेव कहा करते थे प्रमाणिक गुरु कृष्णा को प्रकट कर सकते हैं। in your heart, in your mind, in your consciousness. You'll feel more Krishna's presence. आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चेतना में आप कृष्णा की अनुभूति और ज़्यादा कर पाएंगे अपने जीवन में। So we're like, Krishna, you know, can I associate with you? Krishna may or may not hear the prayer, right? तो हम कृष्णा से कहते हैं कि कृष्णा मैं आपके साथ संग करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कृष्णा हमारी प्रार्थना न सुने। But Krishna hears the prayer of his pure devotee representative, Guru. कृष्णा हमारे अपने शुद्ध भक्त गुरु की प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। So if the Guru is praying Krishna, if you don't come and shower your mercy on us, how will survive it? How will make it? तो अगर गुरु कृष्णा से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप यहाँ नहीं आएंगे, अपना कृपा नहीं बरसाएंगे, यहाँ प्रकट नहीं होंगे, तो हम कैसे इसको कर पाएंगे? And because Guru is trying to please Krishna and serve Krishna, Krishna Parampara, then he completely dependent on Krishna's mercy. और क्योंकि गुरु कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण परंपरा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कृष्ण की कृपा पर पूरी तरह निर्भर है। Otherwise, alone, what can you do? वरना हम अकेले स्वयं से क्या कर सकते हैं? It's not that Guru just comes and speaks philosophy and like philosophy alone is like food for your soul. ऐसा नहीं कि गुरु आके कुछ आपको सिद्धांत, कुछ शास्त्र उनके बारे में बताएंगे और वो शास्त्र ही काफी होगा आपको बस आत्मा को भोजन देने के लिए। Yes, I'm using that intellectual explanation of that shloka, you know, it's like that's not food for the soul. कि मैं अपनी बुद्धि से कैसे श्लोक के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ये आपके आत्मा के लिए भोजन नहीं है। It may a little bit intellectually stimulate you, but that's not going to feed your soul. हो सकता है आपकी बुद्धि को थोड़ा बहुत हिला देगा, लेकिन वो आपके आत्मा को कोई भोजन नहीं है। Unless Krishna manifests, no soul can be pacified, no soul can be purified or happy, feel any type of peace or happiness. अगर कृष्ण वहाँ प्रकट नहीं हो तो कोई भी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, शांत और सुखी का अनुभव नहीं कर सकती। In that pastime with Advaita Acharya, you know, when he calling the Lord to come, और ये जो लीला है जब अद्वैत आचार्य ने भगवान को आने के लिए आह्वान किया, they're preaching and nobody joining them. वो प्रचार कर रहे हैं और कोई उनके साथ जुड़ नहीं रहा था। And they understood, right? If Krishna Mahaprabhu doesn't come, nobody's going to become devotee. और वो समझ गए थे अगर महाप्रभु कृष्ण स्वयं नहीं आएंगे, असल में कोई भक्त नहीं बनेगा। So he's offering his prayer, please you come. If you don't come, nobody's going to become devotee. तो वो अपने प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो कोई भी आपका भक्त नहीं बन पाएगा। Even Advaita is saying, don't give me this name Acharya. यहाँ तक कि अद्वैत ने ये भी कहा कि मुझे आचार्य मत कहो। If I can't make you come here, don't call me Acharya. अगर मैं आपको यहाँ प्रकट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे आचार्य मत कहिए। That's not fitting name for me then. मेरे लिए सही नाम नहीं है फिर ये। And when Mahaprabhu came, he said, because of the cry of my devotee, then he forced me to come. और जब महाप्रभु आए, प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा मेरे भक्त ये मेरे लिए जब रोए तो इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। So that's Guru. वो है गुरु। Right? If we can't make Krishna even come for ourselves, how are we going to make him come for anybody else? अगर हम कृष्ण को खुद के लिए भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किसी और के लिए कृष्ण को कैसे प्रकट करेंगे? Then it's just all like theoretical, institutional, mechanical. That's not food for the soul. तो ये बस किसी तरह से मौखिक होगा, किसी तरह से मशीनी संस्था के रूप से सही होगा, लेकिन ये आत्मा के लिए भोजन नहीं होगा। I heard many gurus, मैंने बहुत सारे many गुरुओं से preachers, teachers, everyone trying to help in their own way. No problem. प्रचारक, शिक्षक सभी लोगों ने अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास किया, उसमें कोई समस्या नहीं। But it wasn't food for the soul. I wasn't completely satisfied. लेकिन आत्मा के लिए मुझे भोजन नहीं मिला, मैं पूर्ण रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाया। Until I met my spiritual master. जब तक मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से नहीं मिला। Then I realized that his kṛtaḥ, his association and the effects of hearing from him was completely different from my hearing and associating with anyone previously. और उनके साथ अनुभव करके, उनका जो मुझे अनुभव मिला, उनसे श्रवण करके, उनके संग करके, जिस तरह का प्रभाव मैं देख पाया, किसी भी अन्य गुरु, किसी भी व्यक्ति के साथ संग करके वो प्रभाव मुझे आज तक कभी नहीं मिला था। Because Krishna manifest there means Krishna is satisfied, Gurudev is satisfied, then our soul is satisfied. कृष्ण अगर संतुष्ट है, गुरु संतुष्ट है, तो हमारी आत्मा भी संतुष्ट होगी वहाँ पे।
The more he keep talking and preaching and speaking, then it's like a food. I felt like it's a food for the soul. और जितना ज़्यादा वो बात करते रहे, जितना ज़्यादा वो प्रचार करते रहे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को भोजन मिल रहा है. And all other preachers and teachers and scholars and all these other people, they could not duplicate that. और जितने भी अन्य प्रचारक, गुरु, शिक्षक, वो इस बात को इसको कभी दोहरा नहीं पाए इस अनुभव को मेरे साथ. They're all trying, they're speaking philosophy and giving the class, but not food for the soul. वो सब प्रयास कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी तरह का शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के लिए भोजन नहीं दे पा रहे हैं. That means something different is done. इसका मतलब Krishna. कुछ अलग है, कृष्ण है. What happened to Dulal? दुलाल को क्या हुआ? Did he get nervous when I mentioned Stalin's name? क्या वो घबरा गया जब मैंने स्टालिन का नाम लिया था? I think it was Stalin made him nervous. He ran out. मुझे लगता है स्टालिन का नाम सुन के घबरा गया, भाग गया यहाँ से. I didn't know he knows about Stalin. मुझे पता नहीं था वो स्टालिन के बारे में जानते थे. Is that all right? क्या ठीक है सब कुछ? So just more hearing and chanting, more association, personal association. और ज़्यादा श्रवण कीर्तन और ज़्यादा व्यक्तिगत संग करना होगा आपको. Then gradually things become more clear. और धीरे-धीरे चीज़ें और साफ होती जाएंगी. Then you get the clarification, तो आपको कुछ सफाई, specific clarification. आपको विशेष तरह से कुछ चीज़ें बहुत सारी साफ हो जाएंगी. It says secret of success is make the instruction of your spiritual master your life and your soul. कहते हैं सफलता का रहस्य अपने आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को अपने जीवन का सार बनाना. So sometimes I meet devotees, they're completely messed up, कभी-कभी मैं भक्तों से मिलता हूँ, पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहते हैं, completely confused. पूरी तरह से भटके हुए रहते हैं. So I said, hey, what happened to you? How you got like this? तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुमको क्या हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? And then I said, well, did you not make the instructions your life and your soul? फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अपने अपने निर्देश को अपने जीवन का सार नहीं बनाया? And they're like, oh, what were my instructions again? फिर वो पूछते हैं, मेरा निर्देश क्या था? फिर से बताइएगा. That means they forgot, इसका मतलब भूल गए वो. right? Can you remind me of what were my instructions again? आप मुझे याद दिलाएंगे मुझे क्या-क्या निर्देश दिया था? So without association and hearing and chanting, then we don't remember. We easily forget. तो बिना संग के, श्रवण कीर्तन के हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं. Because Maya is putting all other thoughts and distraction there. We get confused. क्योंकि माया और बहुत सारे विचार और बहुत सारी भटकाने वाली चीजें डालती हैं, हम भटक जाते हैं उससे. Then our priorities get messed up. तो हमारी प्राथमिकता जो है अस्त व्यस्त हो जाती है. So now we have to be recalibrated. तो हमें पुनः वापस अपनी जगह पे आना होगा. Right? So hearing from Sadhu Guru Vaishnava means recalibration back to the basics. तो साधु गुरु से श्रवण करना मतलब वापस पुनः अपनी जगह पे आना. And now put your priorities back in right order. और अपनी प्राथमिकता को फिर से सही क्रम में डालना. Take shelter, understand your instructions, take shelter of the instruction. अपने निर्देशों का आश्रय लीजिए, उसका रक्षण लीजिए. And do it sincerely, not mechanically, grumbling and complaining. पूरी ईमानदारी से कीजिए, मशीन की तरह मत करिए, शिकायत मत कीजिए. Then you deserve mercy. तो आपको कृपा मिलेगा. Automatically it will come. स्वाभाविक रूप से आपको आएगा. Okay? ठीक है. Thank you very much, everyone. Appreciate it. बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का. Class Śrīmad-Bhāgavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Bhāgavata-Purāṇa, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhaktivedanta ki, Gaura Premanande. Wow, that was a long class. काफी लंबा क्लास हो गया. You were very patient with me. आप लोगों ने बहुत धैर्य बरता मेरे साथ. Sometimes when you meet your friends after a long time, right, you just start talking to them, you forget about like how much time went by. कई बार अपने दोस्तों के साथ बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, आप उनसे बात करते करते कई बार भूल जाते हैं कितना समय बीत गया बात करते. Because you're just talking many things, and like, oh, we talked so long. Sometimes it's like that. I forget how much time went by. कभी-कभी क्योंकि हम बात करते करते भूल जाते हैं हमारा कितना समय बीत गया, क्योंकि हम कई सारी चीज़ों पे बात करते रहते हैं. Because I feel like, we have friends, we have a relationship, we have many things that we have to discuss, right? क्योंकि मैं सोचता हूँ हमारे आसपास कुछ संबंध है, हम सब दोस्त जैसे हैं, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चर्चा करने की. Especially after a long time, you didn't see your friend, you're like, we have to catch up, we have so many things we have to discuss. विशेष करके काफी लंबे समय के बाद हम जब अपने मित्रों से मिलते हैं तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं. Everything. बहुत सारी चीज़ें हैं. Hare Krishna. What is this? ये क्या है? Acha.
Nice gulab jamun. अच्छा गुलाब जामुन है। Hare Krishna. It looks like we have Mahaprasad. ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास महाप्रसाद है। Krishna-katha, Krishna Nam is medicine. This is the diet. कृष्ण कथा कृष्ण नाम Jagannath औषधि है। Mahaprasada. ये आहार है जगन्नाथ महाप्रसाद है। Jai Jagannath. जय Hare Krishna. Hare Bol.